हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई। आप जारी रखिए, तब तक मैं सबको बुला के लाता हूँ। सर आप सबको बुला के लाओ, लेकिन तब तक सर मैं नहीं नहीं, आप जारी रखो तब तक, बिल्कुल। आप फुल तरीके से जारी रखिए। और मैं तब तक बाकी पूरा काम निपटा के जो जो है, क्योंकि अभी क्या हुआ, ये नया स्पेस बना ना, सबके पास पुराना लिंक था। ओके। तो वो लिंक एक बार मैं शेयर कर देता हूँ, तब तक आप जारी रखो। ओके, सो फिर यू शेयर वेलकम द लिंक स्पीच विद फिर ही एवरीबॉडी। करते हैं। जी जी, मैं कर देता हूँ, 2 मिनट में करके आता हूँ पूरा। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। So we are starting the space in like in just in one more minute. More people are joining, and then we can start talking and discussion our discussion about P2P transactions. So the major things or the major topics which we will be discussing today is P2P cryptocurrency transactions, then P2P cryptocurrency scams, which are like it is ongoing and every day people are actually suffering because of P2P scams. And we are also going to talk about the cryptocurrency transactions specifically in India. We will be talking about the market overview, what is the regulatory system or the regulatory status of India as of now, and what are the popular platforms. Talking about popular platforms like WazirX, Local Bitcoins, Paxful, and there are some other popular P2P crypto trading platforms also. We will be talking about the growth prospects about B2B, P2P cryptocurrency transactions in India. Other than this, we'll be also discussing about crypto tax status right now. What are the possibly categorization? When we talk about the categorizations of crypto tax in India, that is, we can categorize these taxes in like short-term capital gains, which can you can say that which can be applied in crypto like in like more like less than 36 months. Okay, so we can talk about the possible categorizations, as well as we'll be talking about how we should keep the record of crypto transactions, what is about like how we should be keeping all the records like documents or maybe the dates, the important amount, what are things we have done. Then it is also important to take professional consultation for the people who are not very much familiar with the whole system, the tax system right now. And it is also noticed that the income tax department is sending notices to the people who have done cryptocurrency transactions, and they are tracing things now. So these are the major topics about which we are going to discuss today. So Vijay, हमारे host और दोस्त, hello जी जी sir. So जी जी please जी जी। as a host to start with the things. I think मैंने थोड़ा हाँ, बेसिक चीजें तो आपने बोल दी है. बहुत मदद कर दी यहाँ पे बीच में भाई। ये अचानक से पूरा सिस्टम का थोड़ा गड़बड़ी की वजह से हमारा पूरा, क्या बोलते हैं, एक सेटबैक आ गया था। Okay. थैंक यू वेरी मच, आपने संभाल ली चीजें। तो आई थिंक जो लोग आने वाले हैं वो आ ही जाएंगे धीरे धीरे, पता नहीं, क्योंकि मैंने पहले उनको लिंक भेज दिया था। हमने ये वाला तो शेड्यूल किया था Okay. एक्चुअली पहले, तो वो लिंक पहले से था हम लोग के पास। No problem. तो मैं वही सोच रहा था कि क्या थोड़ा सा वेट किया जाए या कंटिन्यूटी में चला जाए, क्योंकि हमारे पास फिर स्पीकर्स की कमी है। अनुपम भाई, मैं आपको स्पीकर का इनवाइट भेज रहा हूँ, At प्लीज least आ जाओ यार। let's hear the voices of other people. हाँ, हमारे पास वैसे भी अब थोड़ी सी कमी है यहाँ पे, तो हमने एक्चुअली सोचा था कि लाइक सब कुछ इतना पूरे तरीके से प्लान किया तो सब कुछ सही जाएगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी है, कहीं ना कहीं फेल हो ही जाती है। वही ना, हम चलते रहेंगे। अनुपम भाई नमस्कार। आप भी अपनी आवाज एक बार चेक कर लो। Hi, Vijay, can you hear me? या Yeah, या परफेक्टली yeah. फाइन भाई, परफेक्टली Thanks फाइन, for थैंक यू वेरी मच। inviting us, Vijay, and happy to be part of this great P2P discussion that we are having. Happy to contribute whenever you need me. थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। Not a problem, man. बहुत बहुत धन्यवाद। कोई परेशानी नहीं. No worries.
बस एक सेकंड में एक चीज सोच रहा हूँ कि दूसरे डिवाइस को भी मैं एक बार कनेक्ट कर दूं और उसमें मैं वो डाल दूं ताकि हमारे पास पावर रहे अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो। एक सेकंड दीजिए। So you're talking about the electricity power or some other power? आई एम टॉकिंग अबाउट अथॉरिटेटिव पावर की अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हमारा Okay. स्पेस चलता Okay. रहे। लेकिन मेरे को लग रहा है कि ट्विटर नहीं चाह रहा कि हम वो कर पाए, तो फिलहाल हम इसी के साथ चलते हैं। फिर शुरू करें, हम इस चीज को शुरू कर ही देते हैं। लाइक काफी लोग आ चुके हैं, नहीं तो लोग बोलेंगे भाई क्या चल। अरे एक सेकंड, सोनू भाई भी आगे। अरे ट्विटर प्लीज साथ दे दे भाई। कहाँ के सोनू भाई, दिखने बंद हो गए मेरे को। So सीए सोनू दिखाई दे रहे हैं किसी को लिस्ट में? नहीं नहीं मेरे नहीं साथ नहीं ही गड़बड़ नहीं, हो he रही is है। not visible right नहीं है, now. मेरे को दिखे थे। So हाँ Vijay, मेरे को Vijay, in दिखे the थे। meanwhile, can you please tell us about like how you thought about that there should be a good discussion on P2P, a big discussion on P2P, and why it is the need of the hour and why it is important right now to discuss on this particular topic. बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये तो उल्टा स्टोरी हो गया। लाइक मेरे ऊपर ही, मेरे साथ हो गया क्वेश्चन स्टार्ट। Yeah, so this is लेकिन something बढ़िया which है। is very important. The host हाँ should let us know about. Okay, बिल्कुल 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 so over बिल्कुल to you. बिल्कुल। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। और पहली चीज ये कि आई डिड अ पोल यस्टरडे, राइट, कि व्हाट लैंग्वेज वी शुड यूज इन दिस स्पेस, एंड द हाईएस्ट वोट्स पीपल गेव टू हिंदी एंड इंग्लिश, राइट। सो हम लोग मिक्स लैंग्वेज में ही चलेंगे, हिंदी इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में ही चलेगा पूरा प्रोसेस। और ये पूरा P2P स्पेस करने का, पर्टिकुलरली स्पेस ऑन P2P के ऊपर करने का इसलिए था क्योंकि इतने सारे स्कैम्स की हमें वो आ रही थी। हम देख रहे थे पोस्ट और लोग मैसेजेस कर रहे थे कि वो P2P कर रहे हैं और उनके साथ स्कैम्स हो जा रहे हैं। किसी को लाइक कोई क्रिप्टो बाय करने की कोशिश कर रहा है तो वहां स्कैम हो जा रहा है, कोई सेल कर रहा है तो वहां स्कैम हो जा रहा है, लोगों के बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए। तो मैं लाइक ऑलमोस्ट एक डेढ़ महीने से काफी सारे लोगों के साथ बातचीत करी कि क्या क्या हो रहा है उनके साथ, कैसे प्रॉब्लम्स उनको हुई। और बहुत सारे लोगों के तो अकाउंट्स अभी तक भी लाइक अनफ्रीज नहीं हुए, अभी तक वो फ्रीज होके ही बैठे हैं, राइट। तो इसलिए मुझे लगा कि यार ये वाली चीज का सॉल्यूशन इंडस्ट्री के लीडर्स ही दे सकते हैं, क्योंकि वो लोग काफी लंबे टाइम से इस चीज के साथ जुड़े हुए हैं, उनको बहुत सारी चीजें पता हैं जो एक एक आम यूजर को नहीं पता होती है। तो इट वुड बी अ बेटर आइडिया कि भाई सबको मिला के लाया जाए, सबको एक उस पे लाया जाए, ताकि वो लोग अपना विजडम जो है वो शेयर कर पाए लोगों के साथ कि हाँ, हाउ दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम लाइक बिकमिंग अ विक्टिम ऑफ स्कैम। क्योंकि स्कैमर्स कभी नहीं रुकेंगे, हमें ही अवेयर होना पड़ेगा कि हमें कैसे बचना है, राइट। तो इसलिए था ये पूरा कि चलो एक स्पेस करते हैं। तो इंडस्ट्री लीडर्स को अप्रोच किया, तो वो लोग ने, अब जसकरण भाई हो गए हमारे, अनुपम भाई हो गए, हर्ष हो गया। हर्ष अभी कह रहा है कि भाई वो नहीं आएगा, अभी बिजी है थोड़ा, लेकिन है हमारे साथ यहाँ पे। तो सबसे बात हुई, सबका यही था कि ठीक है करते हैं। और जरूरी यही था कि लोगों को अवेयर किया जाए कि कैसे बचा जाए इन चीजों से और क्या है सेफ प्रैक्टिसेस। फिर आई थॉट कि थोड़ा सा और भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कंटिन्यूटी में। लोगों को डिसेंट्रलाइजेशन वाली चीजें नहीं पता लगती। पीपल आर लाइक बहुत स्ट्रेस अबाउट दिस क्रिप्टो टैक्स थिंग। लोगों को समझ नहीं आता कि ये टैक्सेशन वाला सीन कैसे करना है भाई, कब टैक्स लगेगा कब नहीं लगेगा। तो नो डाउट टैक्स के ऊपर पहले भी हम लोगों ने स्पेस किया हुआ है, लेकिन आई थॉट कि जब हम P2P के ऊपर कर रहे हैं तो हमें उससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं वो कर लेनी चाहिए, क्योंकि पीपल बिलीव कि P2P अगर हम कर रहे हैं तो भाई हम फिर टैक्स नहीं लगेगा, राइट। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल जो थे, और फिर हमने बीच में ये जब स्टार्ट किए तो बहुत सारे लोगों के सवाल आने शुरू हुए कि हमें ये समझ नहीं आ रहा है, हमें वो समझ नहीं आ रहा। तो आई थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया टू इनवाइट इंडस्ट्री लीडर्स और उनसे पूछे जाएं वो चीजें कि उनको क्या लगता है कैसे क्या करना चाहिए, कैसे जो यूजर है वो सेफ रहे, कैसे वो अच्छे तरीके से इस चीज में प्ले आउट कर सकते हैं। तो हमारे एक्चुअली जो टैक्स वाले थे एक्सपर्ट लोग, वो मैं एक्चुअली उनका इंतजार कर रहा था। जसकरण भाई, जब तक मैं अपने टैक्स वालों को फिर से बुलाऊं
तब तक आप लाइक थोड़ा सा P2P के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि ये लाइक बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो नए हो, जिनको पता ही नहीं कि P2P एक्चुअल में होती क्या चीज है। तो तब तक आप थोड़ा सा प्रकाश डालोगे इस चीज के ऊपर कि एक्चुअल में ये P2P चीज है क्या है। डेफिनेटली मैं बहुत ही बेसिक टर्म्स में चीजें बता देता हूँ पहले इनिशियल स्टेज पे एकदम। बिल्कुल। सो व्हेन वी टॉक टॉक अबाउट P2P ट्रांजैक्शंस, P2P का जो बेसिक फुल फॉर्म है दैट इज पीयर टू पीयर। एंड P2P ट्रांजैक्शंस इज नॉट ओनली अबाउट कि क्रिप्टो की सिर्फ बात नहीं होती, बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड भी होता है, रेगुलर भी होता है, बट स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो। सो वी आर टॉकिंग अबाउट P2P ट्रांजैक्शंस इन क्रिप्टो। सो दैट मीन्स P2P transactions actually enable individuals to exchange value directly without involving any centralized intermediary. Okay, so जब दो यूजर्स फॉर एग्जांपल लेट्स से बिटकॉइन एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, या फिर बिटकॉइन के अलावा वो आप ये मान लो कुछ मतलब कुछ पैसे एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, और कोई सेंट्रल इंटरमीडिएटरी उसमें ना हो, ठीक है, तो उसके यूज किए बगैर जो भी पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होता है उनको हम P2P ट्रांजैक्शन बोलते हैं। सो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं सेंट्रल अथॉरिटी की बात करूं या इंटरमीडिएटरी अथॉरिटी की बात करूं, ऐसे कोई बैंक हो गया तो वो इन्वॉल्व नहीं होता, तो तब हम P2P ट्रांजैक्शंस उसको मानते हैं, ठीक है। नाउ talking about benefits, yes, the benefits is of course low fees will always be there in P2P transactions. There will be quick transactions, ज़्यादा स्पीड से होंगे, प्रिवेसी रहेगी, एसेसिबिलिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है। तो बेनिफिट्स, नो डाउट देयर आर बेनिफिट्स, बट इसके अलावा बेनिफिट्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अभी जैसे बेनिफिट्स में मैंने आपको बताया कि लोअर फीस रहेगी, लेस फीस रहेगी, ठीक है, ट्रांजेक्शन हो फास्टर होंगे, प्रिवेसी यहाँ पे ज़्यादा रह सकती है अगर आप चाहो तो, ठीक है। सो दीज ट्रांजेक्शन्स आर एक्सेसिबल विदाउट अ बैंकिंग सिस्टम और अ बैंक अकाउंट। ओके, सो इसके जो बेसिकली जो कॉमन यूजेस हैं, वो अगर आप देखें तो इसके बहुत सारे कॉमन यूजेस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को अगर कैपिटल कंट्रोल्स को अवॉइड करना है, ठीक है, किसी को प्रिवेसी मेंटेन करनी है, ठीक है, किसी को किसी चीज़ के बदले पेमेंट करना है, तो भी हो सकता है। देर आर एन नंबर ऑफ पोटेंशियल रिस्क ऑल्सो आर देयर। सो मतलब अगर हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स की बात करें ना, मतलब बहुत सारे स्कैम्स कॉमन होते हैं, तो अनलाइक बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, crypto transactions are irreversible and anonymous, okay, which can actually make fraud easier also. So ये चीजें हैं। सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में जब हम बात करते हैं, तो सिक्योरिटी मेजर्स आर लाइक यू कैन ऑल्सो यूज रेपुटेबल P2P प्लेटफॉर्म्स लाइक escrow सर्विस हो गया, ओके। सो यूजिंग these services you can actually mitigate the risk of P2P transactions. So what you need to do is you need to always check the ratings, like the user ratings and the trade history, before proceeding with any kind of trade with a trader or via these P2P platforms. Okay, so ये बहुत बेसिक सी चीज़ थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें और भी चीज़ें अगर आपको स्कैम्स अवॉइड करने हैं, जो मेरे को लगता है, और मैं हमेशा इनिशियल डेज पे मैं करता था, अब तो मैं P2P ट्रांजैक्शंस नहीं करता हूँ ज़्यादा, बट इनिशियल डेज में व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू वेरीफाई, आई ट्राई टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेडर। ओके, सो when you are using reputable platforms na, then you need a ID verification over there. Okay, so एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है, ठीक है। जैसे लोकल बिटकॉइंस अगर आप यूज करोगे, सो लोकल बिटकॉइंस ऑफन रिक्वायर्स आईडी वेरिफिकेशन फॉर यूजर्स, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फिर जब हम ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, यस देयर आर एन नंबर ऑफ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स, पैक्सफुल हो गया, लोकल बिटकॉइंस का मैंने आपको भी बताया, बिस्क हो गया। सो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि एज ए इंटरमीडिएटरी होते हैं, ठीक है, और वो escrow सर्विस प्रोवाइड करते हैं जब तक पार्टीज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फुलफिल नहीं हो जाता दो पार्टीज के बीच में। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। कुछ हम अगर रेड फ्लैग्स की बात करें, सो एन नंबर ऑफ थिंग्स, इफ वी टॉक अबाउट रेड फ्लैग्स, एंड जो मार्केट चल रहा होता है, यहाँ का मार्केट थोड़ा सा अलग चलता है, यहाँ पे ऑफर्स अलग अलग रहते हैं, शायद बिलो द मार्केट प्राइस भी रहते हैं, ठीक है, और बहुत सारे सेलर्स में बोलते हैं कि अर्जेंट बेसिस पे ट्रांजैक्शन करना है, ठीक है। तो बहुत मतलब जब कोई बोलता है कि यू कैन टेक दिस पर्टिकुलर क्रिप्टो और पर्टिकुलर थिंग बिलो द मार्केट प्राइस, ओके, सो देयर इज अ रेड फ्लैग कि यार ये मार्केट प्राइस इतने कम प्राइस में क्यों दे रहा है। सेकंड रेड फ्लैग ये हो सकता है कि भाई मेरे को जल्दी करना है, लेट्स लेट्स डू इट फास्ट, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। सो स्कैमर्स जो है वो
यूजुअली ये छोटी टेक्निक्स जो हैं, ये ऐसी टेक्निक्स यूज करते हैं टू स्कैम पीपल. ओके, सो another thing is the people who are new into P2P transactions, for them it's very important to understand that you should never share your private keys or wallet seed phrases. Okay, so wallet seed phrases की अगर हम बात करें, प्राइवेट कीज की बात करें, ये हमारे जो बैंक के पिन, जो बैंक का एटीएम पिन होता है ना, जो बैंक की बैंकिंग अकाउंटिंग डिटेल्स होती है, उसकी इक्विवेलेंट ही रहता है क्रिप्टो में. सो ये चीजें अभी बहुत सारे नए लोगों को नहीं समझ में आती. तो यहाँ इसके कारण भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको हम स्कैम्स बोलते हैं, और मतलब जिसके कारण स्कैम्स होता है, तो लोगों को समझना पड़ेगा. लैक ऑफ अवेयरनेस, अबाउट राइट. अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो लोग अवेयर नहीं है तो स्कैम्स होते राइट. हैं. सो हम्म. जब हम इंडिया की बात करें, है ना, इंडिया में P2P मार्केट इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है बैक टू बैक. एज सच अभी कोई रेगुलेटरी स्टेटस तो नहीं है P2P ट्रांजेक्शंस का, या ये तो कहीं लिखा नहीं है कि इलीगल है. बट यस, द रेगुलेटरी इन्वायरमेंट जब बनेगा, मतलब जब गवर्नमेंट को लगेगा कि इसकी एकदम बहुत ज़्यादा नीड आ गई है, तो उस पर चीज़ें और अच्छे से होना चालू होएंगी. अभी कुछ खास अभी है नहीं एज सच. और अगर हम इंडियन प्लेटफॉर्म्स की बात करें स्पेसिफिक, तो वजीर एक्स है, पैक्सफुल है, लोकल बिटकॉइंस, ये सब मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये इंडिया में भी काम करते हैं. बाकी कुछ नए प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपको विजय बताएगा. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, यस, आपको ऐसी स्पेसेस अटेंड करनी है. यू नीड टू अंडरस्टैंड, you need to get knowledge from the people who are inside the industry, who write about these things. You need to keep yourself aware first. Okay, तो उसके बाद ही आप क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस में जंप करो. इट्स नॉट ओनली अबाउट P2P बट ऑल अदर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द क्रिप्टो मार्केट. विजय भाई. सही बात है भाई. लाइक क्योंकि बहुत रिस्की काम है ये भी. किसी चीज को बिना जाने बिना समझे कोई कदम उठाएंगे तो उसमें रिस्क तो हमेशा रहेगा ही. तो एक मेरे ख्याल से मैंने बहुत क्विकली ना बेसिक चीजों के बारे में बात कर दी है. ठीक है. बिल्कुल बिल्कुल. सो अच्छा, क्योंकि हम थोड़ा टेक्नोलॉजी साइड की बात ज्यादा करने चाह रहे थे, ठीक है. तो अनुपम भाई आप हैं? हेलो अनुपम भाई. Yeah, I'm here, Vijay. I'm here. ओके. तो अनुपम भाई, लाइक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों के लिए, कि लाइक पुट सम लाइट ऑन दिस क्वेश्चन कि हमें क्यों जरूरत पड़ी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की. इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता था. Yeah, that's a very interesting question, and I can go on about this for hours. But I'll talk about it very briefly. So the reason why blockchain came about was after the 2008 crash in the US, right? Bitcoin came about at the हम्म. same time after that. So राइट. just because the money was centralized and the Fed was printing too much money, I think that is the one very strong reason why we needed Bitcoin and blockchain, a decentralized system, immutable system where the money can be flown from one country to another. I think that was the key motive behind Satoshi's white paper. So if you read the white paper, it actually says a peer-to-peer electronic cash system. So anyone from Australia should be able to send money to the UK without ever having a third party or a centralized authority question that money. Uh, so हम्म. it's a very libertarian thought. It's a very old school thought also. It's like in the late 80s, 90s, there were groups who were cypherpunk groups basically wanting to create something like this. In the beginning, I think the blockchain idea was proposed by Adam. I forget his name. Adam Back. Yeah, Adam Back with the white paper of digital gold, and that white paper is also mentioned in the Satoshi's white paper. And he's the one who राइट. leads the राइट. block stream. So the what he proposed in that white paper was very crucial, and the parts of it were used in the Satoshi white paper also. But the blockchain, in the sense, was not introduced. The decentralized ledger was not introduced, which Satoshi, of course, talked about in the Bitcoin white paper in 2009. So, in today's context, why we need blockchain is very simple. The cross-border payments is like one example why we needed it and why we still need it. There are many use cases. I'm sure you'll agree. Like there is tokenization, there is NFT, there is decentralized finance, which is being built on top हम्म. of this. The real-world assets. I'm
I came to Goa for this Web3 conf, and I met so many people who are tokenizing real world assets. One guy is tokenizing farmers crops and all. So blockchain's use cases are plenty, but I think the most interesting one for me and has been forever is the banking the unbanked, giving people in Africa where wallets where they don't have access to the banking infrastructure, and cross border payments where you are able to send money across borders where nobody is there to question you why you are sending that kind of money. And like even today, if you think about it, if you want to send any money, you are all blockchain folks. But if you were to send let's say $50,000 from India, you can still try to send it to any other country. I'll tell you right now, it will take you at least 2 weeks for you to send that kind of money, because you'll have to fill out the Right. forms, you'll have to tell the government why you're sending it, you'll have to tell the purpose code of the money that you're sending, why you're sending, and what will the person who will receive the money, what is the intention of that person to use, what will they do with the kind of money, right? Even Yeah, if you are right. sending it to your family, it will take a How they are related to you as yeah, well, exactly. right? Why they're related. Even Hmm. if it's your son studying in a university, you will have to justify to the Right, government why you sent, because right. all of this is like cryptocurrencies are a big threat to the centralized ecosystem, the centralized powers, how they control you, how they control money. One of the events I was in, this guy brought a very good point and about the Ukraine war. USD in the Russia-Ukraine war is being used as like a weapon. Like anybody can agree on Right. that. Like they cut off Russia with Mhm. SWIFT and all of that stuff happened. So as important as artillery is, it seems like a fiat ecosystem and governments printing endless amount of money is as important as that. And I think Jaskaran just very rightly spoke about a lot of things about P2P also. And I thought P2P is very interesting and has been there since forever. I bought my first Bitcoin using P2P, but not like the traditional P2P. I bought it with the Amazon gift card from an anonymous user. So it's like it is a very risky process when the third party intermediary centralized party is not involved, right? Because you don't know that person. There is no escrow that is there to keep that money for you on hold and see that if that person actually has the kind of money in their wallet. But for example, now Jaskaran just spoke, there are plenty of platforms that facilitate these things. Binance is one of them. Local Bitcoins was there was Right. a big heartbreaking moments for the crypto folks when local bitcoins shut down all over the world. So because Mhm. a lot of people started their journey with local bitcoins, and the system that they had in place, Binance pretty much copied the same thing and called their Bitcoin, Yeah, right? exactly. Um, Hmm. so yeah, I mean, blockchain. To answer your question, Vijay, it is going to be used in a lot of things. There are Bitcoin maxis you will meet who will say that blockchain is only useful for Bitcoin. Like Michael Saylor is one of them, Right. but and so many people believe the use cases of blockchain are limitless. But it depends on the person to person Right. you speak. For me personally, it's the banking the unbanked and cross-border payments that has revolutionized the money as we see it. You know, yeah, एग्जैक्टली एग्जैक्टली भाई। तो स्टोरीज तो बहुत ज्यादा है, केसेस यूज केसेस बहुत ज्यादा हैं। right, right. बात वही है कि हम समझ पाए उस चीज को सही तरीके से। ओके, हमारे पास एक और स्पीकर आ गए हैं अब, लाइक जाना माना नाम क्रिप्टो हनुमान, बहुत लोग जानते हैं इन्हें। भाई थैंक यू वेरी मच, आप आ गए। वैसे तो आपकी प्रोफाइल पे लिखा है फिक्शनल कैरेक्टर, लेकिन हमें पता है आप रियल हो। Yeah, thanks a lot for the invite, Vijay, Jai to Bajrang be Bali here. from my side. हाँ, नहीं थैंक यू वेरी मच भाई कि आपने एक्सेप्ट किया आना, क्योंकि लाइक बहुत जरूरी है कि जिन लोगों को इन चीजों की समझ है वो आगे आए, साथ में आए और लोगों को गाइड करें, क्योंकि हर दिन बहुत सारे लोग इस इकोसिस्टम के साथ जुड़ते जा रहे हैं और प्रॉब्लम यही हो रही है कि उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोग उस चीज में आगे बहुत बहुत मेहनत कर रहे हो एक्चुअली, कि आप लोगों को गाइड कर रहे हो और उनको समझा रहे हो।
कि कैसे चीजें की जाती हैं, कैसे बचना है। तो हनुमान भाई, आपसे एक क्वेश्चन था मेरा डिसेंट्रलाइजेशन को लेके, कि हम लाइक वेब 3 में बड़ा सुनते हैं डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन एक्चुअल में मतलब क्या? Like there are a lot of use cases for it. It's not like a single thing. Sab kuch, sab like it's not like for everything you can define it using one reason. Like हम्म। decentralization ho gaya with Uniswap, which is like a राइट। multi-protocol thing that is there, and then there is हम्म। this actual decentralization with tokens like Dadi, where everything is tokenized, and instead of relying on centralized cloud infrastructures like AWS or Google Cloud, you can take राइट। some infrastructure that belongs to someone and run your entire company with that. हम्म। So decentralization, if I have to put it in a single line, it's like एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगा जो भी like you can हम्म। define as to how you want your entire governance to work. Like for राइट। example, let's say you run some kind of forum like this हम्म। on AWS, for example, and राइट। then if someone complains that okay, whatever this guy is speaking, it is anti-government or like anti whatever, and the government राइट। can just issue a notice, take you guys down. But if you kind of बिल्कुल। properly organize it using decentralized manner on Dadi or any other similar alternatives, it's like they हम्म। have. It's not like a single point of failure. No one can take you down. You have that freedom of speech and the fundamental right that everyone should have. Like there are multiple use cases. एक definition में you cannot put what exactly is decentralization, but I think ये बोल सकते हैं. बात तो सही है। तो हम जैसे अभी डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो वी ऑल नो कि वो अभी तक हम लाइक फुल्ली डिसेंट्रलाइज नहीं है, बिकॉज वी नीड एटलीस्ट सम काइंड ऑफ सेंट्रलाइज अथॉरिटी, है ना? कुछ भी आप कर रहे हो तो आपको कोई ना कोई तो चाहिए, राइट? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, डू यू फील इन फ्यूचर देयर वुड बी एनी पॉसिबिलिटी टू गो फुल्ली डिसेंट्रलाइज, कि हमें किसी की जरूरत ना पड़े कोई ऐसी अथॉरिटी की? इज दैट पॉसिबल? Yeah, I mean, it is always possible. उन लोग को इतना literacy भी आना था. Like if you look at the 2017-18 atmosphere, तब तो exchanges थे बस. No one even heard the word Web3 back then. There were a couple of few new exchange and stuff, but everyone like it was all Coinex or it was all Wazirex and stuff, Binance and stuff. But then people got to know कि अरे यार ये लोग let's say the exchanges are getting closed or for some reason someone is blocking the wallet, and then your entire money and funds that you have is kind of gone. So राइट। with decentralization and especially जब complete decentralization का बात करें, uh, it's really tough because people lose, in my opinion, this is my personal opinion, people tend to lose a lot of money when they go complete decentralization instead of centralization. Like let's say you just lost your wallet keys and राइट। whatever funds you hold are like just gone. But if you trust some central exchange, they are kind of, to some extent, they are kind of safe. But again, we saw what happened with FTX and stuff. But राइट। again, coming to that thing, I think लोग में वो literacy आना चाहिए, financial literacy, and जो उनको चाहिए वो उनको exactly पता चलना चाहिए. Then we can like come to it, but it will definitely take some time. ठीक है, हाँ सही बात है, So, लाइक टाइम के साथ ही चीजें होंगी। Vijay, तो वैसे adding हमारे, to जी बोलिए। Hanumanji's things which he has told right now, uh, जी। there was a point when I actually felt, जब when back-to-back news were coming about the scams which are going on, and when we talk about decentralization, तो मेरे को एक बार बीच में ऐसा लगने लगा था कि decentralization ही अपने आप में scam है पूरा का पूरा, ठीक है? तो या यही उस एक एंड खतरा है। आफ्टर दैट व्हिच आई बिलीव्ड, लाइक मेरा जो बिलीव है वो डाउस पे ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है? सो दैट इज समथिंग ओके। which I felt at certain point of time, and there are n number of people, not n number of people in this world who are actually like, अगर हम सिंपल बात करें, ठीक है? मान लो आप रोड पे चल रहे हो, ठीक है? आप कहीं पे गए और आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, आपको किसी ने चाकू मारी, लेट्स से somebody has hit you or somebody has actually murdered somebody, okay, so where will you हम्म। go?
you will definitely go to a police station or a government or a police station or a government employee, or maybe it's some politician or somebody who is in the government. Okay, so there you can raise a बिल्कुल. complaint. You can tell them कि भाई मेरे साथ ये गलत हो गया, these things I am going through and please help me out. And here comes the constitution. Okay, because हम्म. constitution gives the right to each and every citizen to raise these issues and talk about it. And proper there are some, मतलब हर क्राइम का उसमें आपको पिनलाइजेशन है, हर क्राइम का आपको पेनल्टी है, ठीक है, आपको मालूम है कि ये क्राइम किया, हम्म. इसकी ये सजा होगी। ओके, सो बिल्कुल. व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिप्टो, अगर यहाँ पे स्कैम्स होते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे सेंट्रलाइज हम्म. एक्सचेंज में कुछ हो रहा है या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में कुछ हो रहा है, ओके, आपके हम्म. साथ स्कैम्स हो गया, आपके साथ एन नंबर ऑफ चीज हो गई, तो आप किसके पास आओगे? हु इज द अथॉरिटी ओवर हियर? तो लोगों के मन में अभी यही है, गवर्नमेंट भी यही क्वेश्चन करती है कि भाई यहाँ पे जब आप डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हो, व्हेन वी टॉक अबाउट क्रॉस हम्म. बॉर्डर्स, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। सो बिल्कुल. स्कैम्स विल, देखो कोई भी सिस्टम होगा ना, इफ वी टॉक अबाउट शेयर्स आल्सो, ठीक है, 1980s में, हम्म. 90s में देयर वर एन नंबर ऑफ जी. स्कैम्स। ओके, स्टिल स्कैम्स आर गोइंग ऑन। ओके, डब्बा ट्रेडिंग वाज देयर। ओके, सो एट हम्म. राइट नाउ वी आर आल्सो एट अ सिमिलर स्टेज, जब जिस स्टेज पे शेयर मार्केट हुआ करता था। ओके, सो हम्म. स्कैम्स तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, वो तो होते ही रहेंगे, ठीक है। सो अगर इफ यू कीप ऑल दीज थिंग्स असाइड, फाइनेंशियल लिटरेसी की अगर हम बात करें, तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स, every exchange, every company who is working in the domain of crypto or blockchain or web3, they should हम्म. actually they should actually keep certain budget aside for them to run these awareness campaigns on a regular basis, ठीक है। It's not only about community meetings, we are into community and we understand how community meetings actually take place। वहाँ पे सिर्फ ऐसे लोग आते हैं जो कि खुद इंटरेस्टेड होते हैं। ओके, बट हम्म. अगर कोई इसमें सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, क्रिप्टो में कोई ब्लॉकचेन नहीं, मतलब कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई गवर्नमेंट इसको गवर्न नहीं कर रही है, सो इट्स द ड्यूटी ऑफ द कंपनीज हु आर इन वेब3 इन क्रिप्टो टू रन अवेयरनेस कैंपेन्स हम्म. ऑन डिफरेंट मीडियम्स, लेट्स से डिजिटल न्यूज चैनल्स एवरीवेयर, हाउ टू स्टॉप these scams and how to get people know about all how these things actually takes place। ओके, देन ओनली उसके राइट. बाद ही ट्रस्ट बढ़ेगा मार्केट का, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि बिल्कुल. कुछ भी बिल्कुल. चल रहा है, कोई कुछ भी कम्युनिकेट कर रहा है। आज मैं उठा, मैंने एक व्हाइट पेपर लिख दिया, व्हाइट पेपर को लाइव कर दिया, उसके बाद मैंने एक ब्लॉकचेन पे अपना एक टोकन बना लिया, कुछ भी, सबको टोकन बेच रहा हूँ मैं, प्राइवेट सेल कर रहा हूँ, सबको व्हाइट पेपर जाके दिखा रहा हूँ, पैसे लिए और मैं भाग गया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज बिल्कुल. गोइंग ऑन राइट नाउ, एंड दैट इज द वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस सिस्टम राइट नाउ। सो अवेयरनेस इज डेफिनेटली, अवेयरनेस इज नीडेड। सही I बात है. 100% agree with Jaskar, and like he rightly pointed out, scam is not a phenomenon of Web3. Scam is a phenomenon that happens in any industry. I'm sure you guys have heard of those telephone scams where people cheat people others to put their credit card. There are a lot of scams that happen in Africa. We got we got scammed in Africa also when you were trying to launch there in the beginning. So there are people who want to get you and who are out there to take advantage of you if you're not fully aware. And I 100% agree with Jaskaran that there have to be more campaigns to educate people how they can get away without getting scammed. And I think राइट. विजय आपने ये मुहिम यहाँ से शुरू करी है, तो ये काफी आगे तक जाए आपका ये जो है ये इस डिस्कशन से आपके और डिस्कशंस हो। बिल्कुल अनुपम भाई, कोशिश यही है कि इस मुहिम को हम जारी रखें, जैसे आपने अपना वो टूर जारी रखा है, ब्लॉकचेन टूर। तो मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि ये चीजें चलती रहें और हम टॉपिक्स पिक करते रहे, कुछ ना कुछ ऐसे जो कम्युनिटी को एक्चुअली लाइक सपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, जैसा भाई बोल रहे थे कि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक लाइक कोई भी चीजों का सॉल्यूशन पाना पॉसिबल नहीं होगा। सोनू भाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, टैक्स एक्सपर्ट है। सोनू भाई, वेलकम, वेलकम टू द शो। हाय हाय विजय भाई, थैंक यू सो मच। ओके, तो सोनू भाई आपकी तरफ मुड़ते हैं, थोड़ा सा रुख करते हैं आपकी तरफ और थोड़ा लेजिस्लेशन की बात करते हैं कि आपको लगता है इंडिया में कभी लाइक ब्लॉकचेन को लेके लेजिस्लेशन आएगा? जैसे अभी तो लाइक बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हो गई हैं, जैसे एल सल्वाडोर ने तो अपनी करेंसी ही बना लिया है बिटकॉइन को, राइट? तो हम लाइक वो बोल सकते हैं कि वहां पे ब्लॉकचेन को लेके बहुत ज्यादा लोगों के अंदर समझ आ रही है अब।
आपको लगता है कभी इंडिया में भी ऐसा होगा कि लाइक आप दुकान पे जाओ और आप वहां जाके लाइक क्रिप्टो से, लेट्स से बिटकॉइन से, यूएसडीटी से आप कोई चीजें बाय कर पाओगे? कभी ऐसा पॉसिबल होगा? विजय भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक दैट विल एवर बी पॉसिबल। सो उसके मतलब वन मेजर रीजन इज कि इंडिया का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है दैट इज इम्पैक्टेड सिग्निफिकेंटली। क्योंकि अगर आप ओके। पूरा यूएस ये पूरा क्रिप्टो का भी अगर आप अगर मार्केट देखोगे, एवरीथिंग इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर्स। बिल्कुल। And for an upcoming country like India, that is not the right thing. क्योंकि मतलब why does every country focus on growing their exports while trying to minimize their imports? क्योंकि राइट। the only objective is that you get a better currency which strengthens your currency. So you start selling whichever is stronger, so that you yourself as a nation can progress. राइट। But with सही बात है। crypto, the whole industry is denominated in US dollars. That is also a reason why RBI is very much against it. So the very हम्म। first thing that you will hear from the governor's point of view is that everything is in dollars. So I don't want even to evaluate the industry. हाँ, Right? लेकिन अभी उन्होंने लाइक आज मैं न्यूज पढ़ रहा था कि जैसे पहले जो ऑयल ट्रेड हुआ करते थे वो डॉलर में हुआ करते थे, अभी लाइक इंडिया ने पहला अपना ट्रेड जो है वो सक्सेसफुली कर लिया है एग्जीक्यूट यूजिंग रूपी। Mm-hmm. राइट, तो ये भी Yes. तो पॉसिबिलिटी है कि इनको ब्लॉकचेन के अंदर ये चीजें दिखाई दें एंड दे बी लाइक यार ब्लॉकचेन एक्चुअली ट्रांसपेरेंट है, सिक्योर है, सो वी कैन डू द ट्रांजैक्शंस, कि फास्ट ट्रांजैक्शंस भी होंगी। गवर्नमेंट की ट्रांजैक्शन तो सालों साल पड़ी रहती हैं। भाई गवर्नमेंट को जो देखना हो तो वही देखती है, सॉरी टू इंटरप्ट भाई। ठीक है, दिखाना कोई क्या चाहता है, गवर्नमेंट जो दिखाना चाहती है और हम्म। जो देखना चाहती है वही देखती है, उसके अलावा कुछ नहीं देखती। हम्म। ठीक है। ओके। Yes, yes, I absolutely agree with Jaskara bhai, because I think what happened is, I think recently I was part of one group of ministers जहाँ हम्म। पर like all policy makers were there. तो हम्म। उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि when everyone is issuing tokens, हम्म। like you have Ether, USDC, मतलब they are not central banks but they still issue dollar denominated. So what stops RBI from doing that? राइट। So the point is, the answer is not straightforward. कि मतलब RBI wakes up and issues a token on the blockchain and then everyone can buy and sell it. So there are financial implications. क्योंकि India is a country, तो मतलब you are part of many global organization. FATF हो गया, FSB हो गया. So all of these are kind of regulators who regulate every type of activity. जैसे हम्म। financial crimes हो गए. Now the issue there is, even if RBI issues a token, it needs to ensure it goes through financial due diligence, it goes through KYC requirements, and doing that on chain as on today is not possible. क्योंकि हम्म। अगर आप ही imagine करो, I can go to a DEX, I can swap Ethereum to USDC, I don't have to do KYC there, राइट। right? So बिल्कुल। that is the concern there. बिल्कुल। बिल्कुल। बात तो सही है भाई आपकी। तो फिर से हम लाइक उस हिसाब से हमें वापस P2P ट्रांजैक्शंस के ऊपर अगर हम बात करें, हनुमान भाई एक छोटा सा क्वेश्चन और आपसे। Yeah, tell me. ओके। हैं आप? नहीं, मैं जस्ट ये वेरीफाई कर रहा था कि आप हो कि नहीं, तब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, पता लगा आप है ही नहीं है। ओके। सो P2P के बारे में हमने बात करी, हमने लाइक अभी लाइक सारी बातें हुई कि स्कैम्स हैं और बहुत सारी चीजें स्कैम्स हो जाती हैं बीच में। तो लाइक व्हाट डू यू थिंक, व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स वी आर स्टिल लैकिंग टू मेक P2P ए बेटर एंड सेफ प्लेस फॉर ऑल, कि कोई भी न्यू भी बंदा भी आ रहा है वो भी इजीली कर पाए और उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो? लाइक क्या लैक कर रहे हैं हम लोग अभी इकोसिस्टम में? Yeah, I still get around at least 5 messages every day that their accounts are blocked because they use हम्म। P2P. ये तो थोड़ा बड़ा इशू है. We, I guess, behind the scenes there were a lot of articles as to even the police were involved. So anyone who is doing Binance P2P, I think they should be very careful. हम्म। Again, like if you look at this part where why don't people actually want to withdraw money through normal centralized exchanges, it might be because of the rate they are getting or too many compliance requirements they are facing. So राइट। I think at the in the short term, the best thing that they can do is refrain from Binance P2P. I mean, that हम्म। is the only thing they can do. But again, there are like other alternatives that are available. Like for example, if you guys have heard about BitSave,
if you have some money in Binance, you can withdraw it to BitSave, and from BitSave you can get the INR back to your bank account. So you could do that. ओके, तो वहां पे वो टीडीएस वाली चीजें हो रही हैं, टीडीएस वगैरह कट रहा है वहां पे? Yeah, उधर वो 1% TDS कटता है, and it is like compliant. You don't have any issues. ओके, So again, if you look at it, that 1% risk surcharge, if you withdraw from Binance thinking that you would save that 1% back, then it is high risk that your bank account will get blocked. Instead of that, you can just pay that 1% with a rate that these guys are already giving you, and then it's safe. ओके, राइट, सही है। पोलका ब्रिज से सोनाली रावत हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं थोड़ा न्यूज एंकर की तरह बोलने लग गया ना, मजा आ रहा है ऐसे बोलने में भी। तो सोनाली, वेलकम, वेलकम टू द शो। Hi Vijay, hi everyone. है, ओके। तो हम P2P के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, राइट? आपने सुन ही लिया, और बाइनेंस की बात उठाई भाई ने अभी। तो आपके साथ भी कुछ हुआ था, लाइक आप शेयर करना चाहेंगे, लाइक इफ यू आर कंफर्टेबल, क्या हुआ था और आपने कैसे सॉल्व किया? एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। um, मेरे साथ जो हुआ था बेसिकली मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया था क्योंकि उसमें फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन आई थी मेरे अकाउंट में ना, जब मैंने P2P किया हम्म, था Binance से। हम्म, देन जहाँ से वो आया था ना, मतलब जहाँ से फाइल हुआ था, रजिस्टर्ड हुआ था, हम्म, उनको मैंने कांटेक्ट किया था, एंड देन उन्होंने 1 वीक लगाया इसको प्रोसेस करने में। देन फिर वो अनफ्रीज हुआ। मतलब मेरे केस में काफी इजी था ये, एज हम्म। कम्पेयर टू जो लोग सफर कर रहे हैं अभी, उनको बहुत दिक्कत हो रही है इस चीज में। लाइक ये एक तरह से बोले किस्मत की बात है कि एक हफ्ते में आपका केस सॉल्व हो गया। हम्म, हो तो सकता आपने है। फिर कोई सॉल्यूशन ढूंढा कि लाइक कैसे बचा जाए इस चीज से? क्योंकि जो लोग P2P करते हैं वो तो लाइक एक रेगुलर बेसिस का एक्ट है, राइट? कि क्रिप्टो पड़ा है P2P से, या उसको आईएनआर में कर रहे हैं, या क्रिप्टो खरीदना है तो आईएनआर से यूएसडीटी वो कर रहे हैं। तो लाइक कोई ऐसा आपको सॉल्यूशन दिखाई दिया कि कैसे सेफली ये चीजें की जा सकती हैं? सो बेसिकली जब मेरे साथ हुआ था ना, ये मेरे साथ पहली बार हुआ था। देन उसके हम्म, बाद मैंने मतलब एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया जहाँ पे हम हम्म, बहुत सारे इंडियंस हैं जो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो उस ग्रुप में बेसिकली सब लोगों ने, जितना भी जिन लोगों ने सफर किया, और कुछ लोगों के ऐसे भी है जिनके अकाउंट हम्म, अनफ्रीज हुए हैं, तो उन ओके, लोगों ने अपना डाला कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। बट स्टिल इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस है। और इसमें जो मेजोरिटी में चीजें है ना, वो हम्म, सारी की सारी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, जहाँ से हम्म, अकाउंट मतलब पुलिस वगैरह के ऊपर। तो हम्म, बहुत ही काफी लंबा है इसमें चीजें ना, काफी लोग अभी भी परेशान हैं, और लोगों के तो मतलब बहुत सारे फंड्स फ्रीज हो रखे हैं ऑलरेडी। और यही चीजें हैं। बाकी ग्रुप में हम्म, काफी हेल्प वगैरह कर, तो ये सब आई बिलीव कि जिस पे तुम कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लो जिसके साथ तुम कर रहे हो, क्योंकि यू नेवर नो कि हम्म, सामने वाला कौन सी फ्रॉडुलेंट करके या कौन सा फ्रॉड करके तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल रहा है। तो उस तरफ से मतलब राइट, काफी ज्यादा सिक्योर रहो। हम्म, सही बात है। तो हमें लाइक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहाँ पे ये चीजें सेफली कर पाए, राइट? क्योंकि लेकिन अनुपम भाई, आपको लगता है कि ऐसा कुछ क्रिएट, लाइक ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि P2P वाली जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सेफ हो जाएं? लाइक जैसे अभी जो भी फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं, उन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए कुछ तो ढूंढना पड़ेगा, राइट? कोई तो Right, सॉल्यूशन चाहिए ऐसा। right, Vijay, and that of course makes sense. And it is very sad to see that people are getting their accounts frozen. I think that हम्म, should definitely not happen, because just in case if some emergency comes in, and then that's when your account is frozen. And I was hearing one similar story, and then that हम्म, person, I think you were the one who sent me the screenshot, right, Vijay? So that person was to reach out to the exchange, and यस, then यस, the person had some emergency, and the exchange was like, show us the प्रूफ emergency. कि हाँ Yeah, तुम्हारे घर में कोई मेडिकल, यस, यस। yeah, that's again very sad. So we've been building something for a while, and we've already gone live with it, a product called Dynamite. But before I हम्म, talk about it, we actually solved this P2V problem properly. And but before I get into it, I would love to hear from Sonu, see the tax guy you have, to clarify a little bit about
the 30% tax that everybody is very confused about. Is it capital gains? Is it on the transactions that you get 30% paid? I have talked to a lot of CAs, so it literally Hmm. depends on what CA you are speaking with. They have their own perspective on it. But I would Okay. love to hear from Sonu and see what he has to say. सोनू भाई ज्ञान का Yes. प्रकाश डालें. Yes, absolutely, Vijay bhai. So I think the whole confusion revolves around whether the 30% tax is on your net profit, that is like you make some profits, you make some losses, whatever is the net amount you pay tax on that, Hmm. or is it that on every profitable trade that you make you pay 30%? Right. So as far as we have seen all the uh, tax laws that have come, all the guidelines that have come, and like after speaking to like people in the Ministry of Finance, not Hmm. specifically from income tax but rather from the Ministry of Finance, which directly deals with the laws that come out. So the point is very clear. The whole objective is to ensure a retail investor does not trade in the crypto industry. So Hmm. that is the point of view from which legislation is brought in. So that is why, even if you see, I think there was a question that was asked in Rajya Sabha, if I'm not wrong, last year before the finance bill was actually passed. Hmm. So the question was whether set off between one gains in one crypto asset is allowed with gains in another crypto asset. So I Hmm. think that is the point from where this whole issue of set off within the same coin arose. So because Right. what people thought is, because question was asked whether one crypto asset can be set off with another crypto asset, the government said you cannot set off between one crypto asset and another crypto asset. Now the Right. issue there is, people thought that because they are telling no for set off between two coins, maybe within the same coin it is allowed. Right. Hmm. So that is where the confusion started. But the point is there, the question was also whether loss from one coin can be set off with another coin. Hmm. Right. So that is one part, that is one perspective from which we have seen like many people evaluate, and that is what the ministry also says. So that is the intent with which they answered that question. So क्योंकि अगर आप ही सोचो, if I ask विजय Hmm. भाई कि what is your name, तो आप बोलोगे your name is विजय. Right. अभी अगर मैं उसको, if I change that answer a bit, I can say you are Vijay from Mumbai, but the point is I Hmm. never asked where you stay. Right. Right. So वो it has gone into that space where we are assuming certain things, but then ultimately it depends on the tax advisor you are speaking with, just like how Anupam bhai हम्म said. सोनू भाई थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा. नेगी जी बोलने की हिंदी में बोलो. लाइक इसीलिए हम लाइक थोड़ा वो मिक्स कर रहे हैं कि क्योंकि काफी सारे लोगों को इंग्लिश सही से नहीं समझ पाते हैं. सोनू, अगर आप मिक्स. थोड़ा सा वो 30% के बारे में बताओ कि हाँ. वो कहाँ एप्लीकेबल है. जैसे कि मैंने अगर P2P कर दिया और मैं सक्सेसफुली कर पाया, तो वो 30% कहाँ एप्लीकेबल है और वो फिर मुझे कब पे करना है. इज इट एप्लीकेबल जो मेरे अमाउंट पे आया है, या फिर जो मेरा कैपिटल गेन्स है, जैसे कि BTC बढ़ा फिर मैंने सेल किया, उस पर एप्लीकेबल है. सो वो क्लैरिटी अगर आपको है तो आई थिंक एवरीबडी वुड अप्रिशिएट दैट. Yes, Anupam. So let me just break it into two parts. Ek to I'll cover the P2P aspect and any crypto to fiat pairs. And dusra, the second part, we can discuss the crypto to crypto trades also. So जी. at the very first instance, if I am doing a P2P trade, so वहाँ पर I can assume that it is a crypto to fiat pair, क्योंकि I am buying and selling crypto assets in INR, similar to how I would trade BTC INR pairs on WazirX. So यहाँ पर the point is I buy BTC. Now, as a buyer, I don't have to pay tax. So, whenever I'm buying a crypto asset with fiat currency, I don't have to pay any taxes. Now, the second thing is when I would subsequently sell the crypto asset. Let's say I bought 100 rupees worth of Bitcoin, I sold it for 150. Effectively, I made a gain of 50 rupees, on which I will pay the 30% tax. Similarly, if I'm doing a P2P trade, so because most of the people do P2P trading on Binance, WazirX, etc., वहां पर the point is again you calculate the profit. So when I buy USDT for let's say 86 rupees, I sell it for 89. So on the 3 rupees profit, I pay the tax at 30%. Now coming to तो the second, yeah, no to problem. interrupt, but मैं पूछना चाह रहा था कि आपने 3 के यूज केसेस बताए, उसमें there is another thing कि when they receive the payment for the work that they've done for a client, so that is the maximum. जितना मैंने बात किया लोगों से, वो इस यूज केस में ज़्यादा फॉल करते हैं कि the client paid them in USDT or BTC or ETH
और इंडिया में लाके उन्होंने लिक्विडेट कर दिया। वेब3 कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, बट वेब3 कंपनी उनको फियाट में पे नहीं कर रहा है, एंड देन दे बेसिकली व्हाट दे डू, दे हैव नो रिजॉर्ट बट टू P2P। तो उसमें भी ये 30% कहीं एप्लीकेबल रहेगा क्या? Yes, yes, Anupam. I'll just come to that. So उसके पहले we'll just close the crypto to crypto trades part. Yeah. So effectively, like continuing the same conversation, what if I bought BTC for 100 rupees, and then like after a period of time I convert it to Ethereum? Now the point is, when I'm converting that Bitcoin into Ethereum, the market value of Bitcoin is, let's say, 150 rupees. So in this case, what would happen is the tax law would treat the exchange of BTC with Ethereum as an effective sale of Bitcoin. तो इसका मतलब है कि यहाँ पर दो ट्रेड्स हो रहे हैं, एक तो मैं बीटीसी को बेच रहा हूँ, दूसरा आई एम बाइंग इथेरियम. So in this case, my BTC trade will be closed. I will calculate the profit, which is sale value of 150 minus buy value of 100, which gives me a gain of 50 rupees, and I end up paying 30% tax on that. Correct, So correct, this is correct. how it would work in the crypto to crypto trades. Now coming to the point which Anupam asked. So there are like various types of crypto transactions, not effectively which has to do with trading. It may be staking, it may be airdrops, it may be consultancy income, it may be salary. So all of these transactions, they do not fall under the VDA regime, right? Because when you have to fall under the 30% tax rate, you need to satisfy either of the three conditions. So which is either there should be a sale of VDA, or there should be exchange of VDA, or the last point is there has to be a relinquishment of VDA. So if I were to take an example, let's say I'm receiving some salary. Now when I receive salary, I am not selling anything, I am not exchanging anything also, and lastly I'm not relinquishing any asset. So since none of the three are satisfied, I will not fall under the VDA taxation, rather I will fall under the general tax laws. So in this case, what would happen is, whenever I receive, let's say, 1000 USDT worth of crypto as my salary income, I will calculate the market value in INR as and when I receive it. So if 1000 USDT today is worth 88,000, then 88,000 becomes my salary income, which is taxable at my income tax slab rate. Now comes the second order effect of this. So if I continue holding that USDT, and tomorrow when I liquidate it to get INR, the price increases from 88 rupees to 90 rupees. So in this case, effectively, when I'm selling that USDT, I'm getting 90,000 rupees. So there is a gain of 2,000 between what was my salary income and what is the effective sale price whenever I'm liquidating the USDT. So on this 2,000, I will end up paying 30% tax. Brilliant, yeah. Yeah, that actually, people in India have some clarity on this depending on the research that they have done. But out of India, when you talk to people, they straight up say that, okay, India mein 30% people are paying taxes on every transaction that they are getting in crypto. So आपको $100 का crypto मिला, उसमें आप $30 government को दे रहे हो. So right, that's the perspective, and a lot of people in India also think so. I spoke to some of them, and they were talking about it. Mhm. So yeah, that is very interesting. And can you you talked about USDT. Say when they got salary in USDT. So when they are liquidating, then 1% TDS applies, right? That's always there. Yes, yes, that is always there. Yeah, for any liquidation of crypto. But only when they hold crypto, they have to liquidate. If they are not, if some other party is liquidating crypto for them, then they don't have to pay that 1%, right? It depends in what capacity the other party is liquidating. So if the other party is an employer liquidating on behalf of the Yeah, employee, then they will deduct the TDS. correct, correct, correct. Anupam, Yeah, adding to those, hello, adding to these yeah, points, the worst part is even if we talk about the financial experts, or if we specifically talk about the CA community or CS community, even n number of CAs and CAs are also not very clear or very up to date about these particular taxation things. Okay, and that exactly. is one of the major reasons why a lot of users, the people who are into this, are actually end up with paying a lot of taxes, and they pay taxes in a wrong way, and they receive notice at a later stage. Okay, so there is all, Exactly. like, adding to my last point. Well, Jaskaran, I fully agree with you because Sonu has already told there is some gray area which is not covered under VDA right. Hello. and which are covered under VDA. But
the question is always, Sonu, I heard Sonu a lot of times that in where there is no clarity in VDA, in the taxation like P2P or Absolutely. something like that, the onus of TDS lies upon you. Right. So when onus of TDS, you are deducting TDS, my question is to Sonu that in future, even you are not paying taxes or not paying taxes in the proper slab, will that TDS will give a sutra through income tax department to get and plow back the income tax from you in a later Sir, stage? exactly, sir. Even I was also about to ask the same question, but you have asked the same thing. I was also about to ask the same thing, sir. Thank you, sir. Gigi sir, to like directly answer it, I think with futures the issue is it is the exchanges stand to like not deduct TDS. So effectively, my interpretation is that on TDS, effectively there is a sale of VDA. So because even if futures were considered as contracts, these contracts are being purchased by selling VDAs. Now, when there is a selling of VDA happening, at that point TDS has to be done, which currently none of the Indian exchanges are doing. So this is a liability which will rest on the exchanges, and it is possible that the income tax department may raise a demand on them. So other than that, I No, do not. Sonu, my next part of the question, you are talking of the exchanges Yeah, which are I'll have to dealing. just interrupt for a second. Hmm. I am traveling, so I'll have to head out. Vijay, thanks for arranging this थैंक session. यू वेरी मच भाई, अपने टाइम निकाल के आप आए, थैंक यू Yeah, वेरी मच। next time और जुड़ते करो रहेंगे, है ऐसा ना? तो हम भी ज्वाइन करें. बिल्कुल Hanuman ji, बिल्कुल thank you बिल्कुल, so एवरी much. टाइम भाई। No worries. Thank you, man. Okay. Yeah. जी सर, कंटिन्यू कर सकते हैं हम फिर Hmm. जहाँ थे हम। So my question is that, Sonu, you have talked about the exchanges part of P2P, which they are not deducting. But if you are individually doing any anonymous or a P2P individual transaction, you earlier told in many forums that onus of liability of deducting TDS is on you as an Indian citizen. In that case, will that not give a issue to capture in next budget or coming budgets to catch this area of untouched taxation area of P2P? Yes, yes, absolutely, sir. I think this is one area which the tax law has missed, and in future we will definitely see some tax law specific to P2P. But I Why I am telling, I have talked with many regulators. They have and exchange owners when they have even Sumit and all, when they are taking that P2P is a बड़ा scam है, P2P में मत जाओ. It is better to deal with a Sumit also has come that the exchanges are the best way to deal with crypto. Otherwise, you may fall into P2P scam and bank may seize your account and all those troubles may come in as a hassle of not doing dealing the same through the exchanges by going anonymous or P2P transaction. So it is not I always prefer to go either through always to on a valid exchange route, abide by the law and all, because in P2P also individually when you are deducting 1% TDS or asking for some KYC document from the seller or purchaser from the outside India or something, then always you are opening the gate for the legal authorities to plug this area in coming budget. Yes, yes, absolutely, sir. I think so. I think with P2P there are a lot of issues. So one of it, जैसे आपने बताया कि there is a issue of cyber security. People accounts are getting blacklisted. They are being blocked by the cyber crime department. That is one issue. Now the second issue is जैसे आपने बताया कि if you are trading with a person who is based in Dubai or Oman, who are like increasingly doing INR P2P trades on Binance and other exchanges, so वहाँ पर you also get involved in the FEMA regulation, which is again a draconian law where investors can be like prosecuted and significant amount of penalties may be levied. So these two are inherent. Now the third issue which if I may add, is that many P2P investors
when they are trading, they are using an option of cash deposit. So in this, what happens if I am selling crypto assets? The buyer is going to deposit cash directly into my bank account. So this was a option which many P2P traders explored, that in this your account might not get freeze because there is a cash deposit. But purely from an income tax perspective, this is the biggest blunder that anyone can do, because if you cannot explain the source of that cash, because effectively when there is a cash deposit, the department assumes it is a cash deposit by you, and in P2P trades, it is definitely not possible to explain who has deposited cash into the account. So that is where there is a possibility the income tax department will treat the whole deposit as a income rather than treating it as sale value for a VDA. So that is again a bigger issue for the P2P industry. And then again, I agree with you that using Indian exchanges would be the best way to like comply with all the regulations and be safer. सोनू भाई, सॉरी टू इंटरप्ट, थोड़ा सा मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा। कॉइन डिसेक्स के को फाउंडर और सीईओ भी हैं हमारे साथ, सुमित गुप्ता जी। तो ये क्वेश्चन हम लाइक थोड़ा सा उनसे ही पूछ लें। जयजीत सर, नमस्कार। सॉरी आपको भी इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाया, मैं आपका भी वेलकम नहीं कर पाया। वेलकम टू द स्पेस, थैंक यू वेरी मच आए आप। तो आप जो सर क्वेश्चन बोल रहे थे वो एक बार आप फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि सुमित सर लेट ज्वाइन हुए। Sumit and all, my question is that it is traditionally income tax is the first regulation to start with, to include many regulation in future in the crypto area. So we have seen ASCII last year, then income tax, then PMLA law and all those stuff. My question is that when you Sonu is advising a client to deduct 1% TDS, will it not open a floodgate of regulation through income tax department to introduce FEMA, all those draconian law, to, because government also know the flaws and the scams related to P2P area and the bank seizure and all those stuff. So my request to Sumit that how the community can be more peacefully trading exchange se kare, and how they can avoid this sort of draconian law in future, and how they can come into the framework of exchanges in spite of paying 30% taxes. Sure. First of all, thank you, Jayji. Thank you, Vijay, for inviting me to this space. And actually, I just saw your message. I thought, oh, it's happening now. So I joined it for जी like जी, 2 minutes. थैंक I यू was in सर। the middle of something. So, but yeah, I think Jayjit mentioned a very, very important point. See, आपको Indian exchange use करना है, coin indices करना है, नहीं करना है, that is all your call. मतलब you can choose not to do that. My only request to the community is कि नॉन कंप्लाइंट तरीके से आप क्रिप्टो में ट्रेड मत करना। नॉन कंप्लाइंट तरीके से वो इसलिए जरूरी है बिकॉज ऑल ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स, लाइक आई नो सो मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन, जहां से फॉर एग्जांपल कभी कोई नोटिस आ जाता है, और वो इसलिए आता है प्राइमरली बिकॉज कहीं और एक्सचेंज पे ट्रेड कर लिया, P2P पे कर लिया, 1% TDS नहीं दिया, वो सारी चीजें ना, वो आप मतलब दैट opens up lot of risk for a normal customer, which every community member should avoid at any cost. मतलब नॉन कंप्लाइंट तरीके से कभी कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। और P2P प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी लोग यूज करते हैं, उसमें क्या TDS वगैरह का उसमें मतलब वो दे डोंट इम्प्लीमेंट TDS, एंड वो इनकरेक्ट है। इफ यू आर ट्रेडिंग विद एन इंडियन पर्सन ऑन द अदर साइड, देन 1% TDS, then the responsibility comes on the other person, right, to you, which you will not be able to do because आपको पता नहीं आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन। एक्सचेंजेस वो काम आसान करते हैं आपके लिए बिकॉज वो आपके बिहाफ पे उनका KYC होता है, वो दे देते हैं, तो आपकी लाइफ आसान हो जाती है। बट ऐसे कोई P2P प्लेटफॉर्म है जहाँ पे और वो रिस्की भी बहुत होता है बिकॉज सामने वाला कोई कस्टमर क्या बैकग्राउंड है, KYC चेक करते नहीं है, ड्यू डिलिजेंस बहुत स्ट्रांग होता नहीं है, राइट। तो वो ना काफी काफी रिस्की होता है कस्टमर्स के लिए। तो मेरा तो, और मैं काफी वोकल हूँ इस बारे में, राइट। मैं ये नहीं बोलूंगा आप कौन सा, आपकी मर्जी जो एक्सचेंज यूज करना है, बट कंप्लाइंट एक्सचेंज यूज करें। और P2P प्लेटफॉर्म जहाँ पे TDS इम्प्लीमेंट नहीं होता है, वो सारी चीजों दूर रहें तो बेहतर है। अदरवाइज 1 साल बाद या 6 महीने बाद पता नहीं, मतलब वाई डू यू वांट टू टेक अननेसेसरी रिस्क, वो एक रिस्क क्यों लेना है, राइट, 1% के चक्कर में, और एनीवे वो रिफंडेबल होता है। तो मेरा तो बस वही मैसेज है
community के Yeah, लिए? I am totally agreeing with Sumit. I am also very vocal in P2P in many aspects. Why I am vocal, because cost of risk is not greater than cost of control here. Here, cost of risk to me is lesser than cost of whatever you are earning in P2P by not paying 30% tax. Why I am telling you that if sometimes you get caught under bank seizure and all, you ultimately going to the authorities to unplug you from all this trouble. Once you open up your khata, then you are have to, आपका एक बार बॉडी में सोनोग्राफी एक्सरे हो जाएगा ना, then every legal department can come and ask you n number of questions, where you will not get any CA, any lawyer who does not know even the technicalities of P2P to defend you in the rule of law. तो आपको कोई चमत्कारी का पहले दिखा देगा P2P में 30% टैक्स नहीं है, एनोनिमस ट्रांजैक्शन कर लो, एक तो खतरा ही है साइबर सिक्योरिटी का हिसाब से. बट इफ कोई भी एंगल में आपका बैंक अकाउंट सीजिंग बस साइबर सिक्योरिटी एंगल में सीज हो गया, then n number of question you have to see, and your future can also be doomed in the trading of crypto. That is my perspective. That's why I am asking everybody to avoid this sort of illegal activity. जस्ट वन पॉइंट आईड लाइक टू ऐड, जब आप P2P में ट्रेड करते हैं तो जो आपको क्रिप्टो रिसीव होता है वो कहाँ से आ रहा है, किस एड्रेस से आ रहा है, उस पर कोई चेक्स नहीं होते. फॉर एग्जांपल CoinDCX में हम लोग ऑन चेन ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग टूल इंप्लीमेंट करते हैं, उसमें सारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो उसके थ्रू आते हैं, तो पता रहता है कोई गलत एड्रेस से तो नहीं आया है, कोई गलत थेफ्ट क्रिप्टो तो नहीं. वो सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है. तो इट्स नॉट अबाउट TDS ओनली, उसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि एक इंडिविजुअल जो P2P प्लेटफॉर्म पे दूसरे साइड बैठा है उसके पास रिसोर्सेज ही टूल्स उतना होता ही नहीं है to make sure that the crypto that you are receiving is the right or untainted crypto, right? Untainted crypto मतलब वो pure crypto, you want legit crypto, you don't want some stolen or theft crypto. So I think वो सारी चीजें भी important होती है इसमें देखना. तो just to summarize point from my side and then I'll leave the space is one, give importance to compliances rules जो भी बनाए हैं. I know बहुत tough हैं, 1% TDS is high, 30% tax is high, but rule is rule, right? So और वो temporary है, मतलब we are also pushing from our side कि वो कम हो जाए, wherever possible, you know, requesting everyone, every stakeholder कि please इसको कम करो because it's not in the best interest of the community and the industry. तो वो चल रहा है parallel में, but जब तक है तब तक जो भी कंप्लाइंसेस हैं, जो भी रूल्स हैं, वो मेरी दरख्वास्त है कि मतलब वो कम्युनिटी को फॉलो करना चाहिए. एंड ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वी ऑल वांट कि कम्युनिटी ग्रो करे आगे, एंड वी डोंट वांट कि बैड एक्टर्स इस स्पेस में रहें. बिल्कुल भी नहीं चाहिए बैड एक्टर्स, उससे इंडस्ट्री पे रेपुटेशन रिस्क होती है, राइट? तो एक वो पॉइंट है. दूसरा, वेन एवर यू आर डीलिंग इन क्रिप्टो, it's also about the quality or the crypto that you hold. You don't want it to receive from someone who is not the right actor. So I think those things are important. And with that message, I'll drop the space. But happy Independence Day to every one of you who has joined this. Thank you so much, Vijay, for organizing this. Thank you, Jayji. Thank Thank you you, very Sonu. much, sir. Thank you very much And for joining. keep doing such informative sessions for the community. बिल्कुल And बिल्कुल sir. I'll try to join as much as possible. Thank you so Sure much. sir, sure sure. Thanks Sir. so much. Thank you sir. Thanks. Thank you. Okay. So I think Je- there is general consensus here, Vijay, that don't do P2P. P2P is bad because you हाँ can get scammed. If you do, try to do with the right people with 1% TDS and all of that stuff. And I बिल्कुल. asked earlier, about Dynamite a little bit. Why we built Dynamite is हम्म. for all the people who are receiving crypto as payments, because our company Octaloop was receiving payments from Binance, from CoinMarketCap, Cointelegraph, MX. These are our clients that we work with them, right? We were providing them services, PR services, and all of that stuff, and they were paying us in crypto because no Web3 company will ever pay you in fiat. And in the end, when the money came to India, to me, I had to find a lot of ways, to liquidate all of that crypto into fiat because I had to pay my team in fiat. So, Right. so there's one aspect of this, that people who are receiving money from legitimate actors across the world should be able to get their INR without any problems. Like Sumit mentioned, Definitely, that definitely. we need to make sure that there is no bad actors in this space, and
no Indian exchange right now is allowing you to withdraw INR. You can't even, you have to first deposit INR, buy crypto, and then withdraw INR. You cannot just put your USDT and convert it into INR and withdraw that INR, right? Right. So we Right. are Right. allowing that on our platform. Anupam, Yeah, I think you are talking right. Last day when I heard about Adi and this Gaurav Dahake show, he yeah, was also telling to convert the cash through P2P route. yeah, You directly आप convert नहीं कर पाओगे. Ultimately, you have to get the cash through P2P conversion only. yeah. सर यहाँ पे लॉ बिल्कुल, भी आप बीच में आ बिल्कुल सही जाता है बोल सर. रहे वी हैं कैन नॉट एक्चुअली गो एंड डायरेक्टली परचेज इट बिकॉज लॉ डजंट अलाउ इट. मतलब जितना मेरे को मालूम है. सर, right? So, just Karan, just to point out, one thing here is something we have figured out for the Indian community, Okay. for people who are actually getting paid from legitimate actors, from the companies that we're working with. And we already have a good number of users who are using Dynamite to get their payments in INR. So essentially, we have gotten a license in the US with FinCEN, and that's how it's an MSB license, so a money service business license we already have from the US government. And we use that entity to process all of these transactions. For example, in India, somebody invoices someone in Europe or US, for example, for $1,000. That person will be able to pay that person in India who is a freelancer or a contractor, and essentially $1,000 they can pay in USDT, and this guy in India receives all of that USDT in INR directly. So since this guy is not ever touching crypto and liquidating crypto, अनुपम भाई, सॉरी सॉरी, बीच में yeah, इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे एक्चुअली कमेंट्स यही आ रहे हैं कि हिंदी में बोलेंगे प्लीज, क्योंकि लाइक okay, sure, है ना, sure, क्योंकि yeah, आप yeah, एक बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट क्लियर कर रहे हो, बहुत अच्छी एक नॉलेज यहाँ है, तो आई डोंट वांट कि कोई मिस कर जाए इस चीज से, नहीं प्लीज नहीं, थोड़ा सा sure, मतलब sure, मिक्स कर sure, दीजिए. sure, sure, थैंक 100%. यू भाई, थैंक यू. तो जो लेजिटिमेट एक्टर्स हैं इंडिया में और जो पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो अभी अपने एक द गर्ल हु हैड कम, जो उनका स्कैम हो गया था, उनका अकाउंट फ्रोज हो गया था, जितने भी हमने लोगों से बात करी है, सब लोगों ने हमसे बोला है कि हम कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, हम फ्रीलांसर्स हैं, हमारे, अच्छा आप बताओ बाकी उनके पास यूएसडीटी क्रिप्टो कहाँ से आया? या तो वो खुद खरीदेंगे, अगर वो खरीदेंगे आईएनआर से, तो देयर इज ओनली वन वे दे कैन बाय इज ऑन कॉइन डीसीएक्स, वजीरेक्स एंड ऑल दीज एक्सचेंजेस, राइट? अगर आप वहां से खरीद रहे हैं तो दे कैन ऑल्सो वहां पे सेल भी वहीं कर सकते हैं और आईएनआर ले सकते हैं. पर जो लोग पी2पी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास यूएसडीटी बाहर से आया है, बीटीसी बाहर से आया है, कहीं उन्होंने काम किया है या फिर कंसल्टिंग सर्विस दी है या जो भी कुछ किया है, पर वो उसको सेल नहीं कर पा रहे हैं अपने इंडियन एक्सचेंजेस पे भी, क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस अभी अलाउ ही नहीं कर रहे हैं आपको कि किसी भी काइंड का डिपॉजिट, किसी भी क्रिप्टो का डिपॉजिट. तो हमने जो बाइनामाइट बनाया है उसमें वो यहाँ का इंडियन फ्रीलांसर कॉन्ट्रैक्टर अपने यूएस वाले क्लाइंट को इनवॉइस कर सकता है, पेमेंट रिक्वेस्ट भेज सकता है, और यूएस वाला क्लाइंट अगर वो वेब 3 का बंदा है तो वो एक्सक्यूज मी, तो वेब 3 का बंदा है तो दे कैन वो अपना यूएसडीटी से पे कर सकते हैं, यूएसडीसी से पे करते हैं, बीटीसी से पे कर सकते हैं, इथीरियम से पे कर सकते हैं, और हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं सारा कन्वर्जन की, हम उसकी जिम्मेदारी 1% टीडीएस की लेते हैं, और हम सिर्फ डायरेक्टली बैंक अकाउंट में डालते हैं पैसा डायरेक्टली. जो यूजर है उसको कभी कभी भी उसको क्रिप्टो टच नहीं करना. दे गेट मनी इन द बैंक अकाउंट, $1,000 का उनको 82,000 एक्सी रेट पे देते हैं. वी ऑल्सो गिव, because we are doing some kind of arbitrage here, because we do on ramps in the US, off ramps in India, और हम अभी 17 अफ्रीकन कंट्रीज में भी लाइव हैं. तो essentially what happens in those countries is कि नाइजीरिया में फॉर एग्जांपल काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं सेंट्रल बैंक को लेकर और ग्रे मार्केट को लेकर, वहाँ भी क्रिप्टो बहुत फ्लरिश कर रहा है, इनफैक्ट पूरे अफ्रीका में बहुत फ्लरिश कर रहा है. तो वो सारी डेवलपिंग कंट्रीज भी सेम चीज़ फेस कर रही है जो हम फेस कर रहे हैं. तो हमारा एक ही मोटिव है कि आप बाइनामाइट पे अगर अपना क्रिप्टो सेल करना, अगर फॉर एग्जांपल आपकी पेमेंट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ यूजर्स आए थे, वो बोल रहे थे कि हमारे पास तो इतना सारा क्रिप्टो है जो कि हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ है और इस क्लाइंट ने पे किया है. तो दैट कैन ऑल्सो बी सॉल्व बिकॉज वी लॉन्च्ड अ प्रोडक्ट कॉल्ड सेल क्रिप्टो. वहां पर आप डायरेक्टली जाके अपना क्रिप्टो सेल कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर आईएनआर. तो उसमें हम आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपका पैन कार्ड लेते हैं, वगैरह वगैरह, सब कुछ लेजिटिमेटली आपका 1% टीडीएस डिडक्ट करके हम आपके अकाउंट में आईएनआर डालते हैं.
इसके ऊपर के लेवल का है, उसमें ये है कि आपका जो क्लाइंट है, जब आप उसको इनवॉइस करते हो, वो आपको बाइनामाइट पे अगर आपके पे कर देता है, तो दैट इज द क्लीनेस्ट सोल्यूशन। एंड देन इन द सेंस आपके पास आईएनआर डायरेक्टली बैंक में आएगा। अगर आपको यूएसडी चाहिए अपने अकाउंट में, तो हम वो भी फैसिलिटेट करते हैं कि आपको जो क्लाइंट ने यूएसडी भेजा है, वो आपको एज अ फॉरेन रेमिटेंस आपके अकाउंट में यूएसडी जैसे आएगा। Even though they have sent it in BTC ETH, all the conversions we do in our backend from our regulated entity in the US, और आपको हम इंडिया में पैसा INR में देते हैं। So that is the crux of the problem we are trying to solve in the country, कि जो भी कम्युनिटी प्रॉब्लम फेस कर रही है P2P को लेके, स्कैम्स को लेके, इतना ज़्यादा पैनिक है मार्केट में, और गवर्नमेंट इज सेंडिंग नोटिसेस टू पीपल, तो वो उसको बंद करने के लिए, इन द सेंस नॉट बंद करने के लिए, बट लाइक थोड़ा काम करने के लिए लोगों को, वी हैव लॉन्च दिस प्रोडक्ट। तो उसमें वी लॉन्च्ड टू सॉल्व आवर ओन प्रॉब्लम्स। हमारे क्लाइंट्स हमें क्रिप्टो में पे कर रहे थे, हमें आईएनआर में चाहिए था, तो हमने वो कर दिया। अभी हमने लॉन्च किया है कि फियाट टू क्रिप्टो भी बाइनामाइट में पॉसिबल है, कि आपका जो बंदा है वो फियाट फ्रेंडली है, वो आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पे करना चाहता है, तो आप क्रिप्टो में रिसीव कर सकते हो। पर मैं वो एडवाइस नहीं करूंगा इंडियन यूजर्स के लिए, क्योंकि इंडिया में अगर आप क्रिप्टो अगर ले रहे हो और उसे कैपिटल गेन जाता है, तो आपको बहुत सारे लॉज हैं जो इस वक्त आपको फेस करने पड़ेंगे। और हम स्टेबल कॉइन बैकरेल को यूज करके फियाट टू फियाट भी कर रहे हैं। सो बेसिकली आप यूएसडी से आईएनआर भी कर सकते हो, यूएसडी से 17 कंट्रीज इन अफ्रीका कर सकते हो। सो अभी हम लाइव हैं यूएस, यूरोप और यूके में, और सारे रेमिटेंसेस कैन गो टू 17 कंट्रीज इन अफ्रीका प्लस इंडिया। वी कैन ऑल्सो डू इंडिया टू अफ्रीका, अफ्रीका टू इंडिया, एंड इंट्रा अफ्रीका ऑल्सो इन द ऑल 17 कंट्रीज। सो इसमें जो सबसे बड़ा यूज केस इंडिया के लिए है वो यही है कि आप अपने क्लाइंट को, जिसको आप जानते हो, और उसको आपको पेमेंट करना है $10,000 का, $50,000 का, $1,000 का, आप उसको अगर इन्वेस्ट करते हो बाइनामाइट से, वो सीधा बाइनामाइट के थ्रू पे करेगा और आपके अकाउंट में उतना पैसा आ जाएगा। इसमें एक छोटा सा कैवियट भी है विजय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उनको थोड़ा सा अमाउंट क्रिप्टो में चाहिए रहता है, क्योंकि मैं जब आई हैड स्टार्टेड अर्निंग इन क्रिप्टो, तो मैं जब सेल करता था, तो मैं कभी 100% सेल नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि चलो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बिटकॉइन में पड़ा इन्वेस्ट, रहेगा अपने हाँ, पास। थोड़ा सा बिटकॉइन में इन्वेस्ट हम्म। होता रहे, तो क्योंकि ये डीसी होता रहेगा, डॉलर कॉस्ट एवरेज होता रहेगा, तो बिल्कुल। तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजीज टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो इन द फर्स्ट प्लेस, राइट, बिकॉज ऑफ द वॉलिडिटी ऑफ द होल बिल्कुल बिल्कुल। आई वुड से। तो उसमें क्या है, आप जब आप इनवॉइस या पेमेंट रिक्वेस्ट भेजते हो अपने क्लाइंट को, तो आप उसमें चूज कर सकते हो कि आपको 90%, एक बहुत सही स्लाइडर है हमारी वेबसाइट पे बेसिकली, कि 95% आपको चाहिए आईएनआर में और 5% आपको बीटीसी में चाहिए। तो 95% ऑफ दैट $1,000 विल कम डायरेक्टली इन योर बैंक अकाउंट एज आईएनआर, एंड 5% आपका वो बिटकॉइन में कन्वर्ट होकर आपके वॉलेट में पड़ा रहेगा। ऐसा आप, हमारे काफी यूजर्स ये कर रहे हैं, तो वो डीसीए हो रहा है उनका, विद एवरी चेक दे आर डीसीएइंग in Bitcoin and राइट। Ethereum. These are the two coins that we support for now. तो ये मैं थोड़ा बताना चाहता था अभी कम्युनिटी को कि अगर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो हमारे पास सोल्यूशन है। वो आकर अगर उनके पास ऑलरेडी यूएसडीटी है, वो भी सेल कर सकते हैं। और अगर फ्यूचर में यूएसडीटी या यूएसडीसी या बीटीसी ईथ आना है अपने क्लाइंट से, तो वो डायरेक्टली पेमेंट ले सकते हैं हमारे बाइनामाइट के थ्रू, एंड द मनी विल डायरेक्टली कम इनटू देयर बैंक अकाउंट, and we do the all TDS thing, all of that stuff on their behalf. So they don't have to go through like a list of P2P people to sell to राइट Dynamite, राइट। Binance पे जाकर देखना है किसको सेल करना है, किसका रेटिंग देखना है, क्या करना है। And we are licensed in the US with the FinCEN. So FinCEN is the Financial Crime Authority enforcement in the US, and they kind of make sure that all of that is happening legitimately. And since we have a license from them, it is they can just trust us with that license, and how we are trying to provide this value to the community. क्या बात है भाई, बहुत बहुत तगड़ी वाली चीज बता दी आपने। एंड एक्चुअली आई वुड लाइक टू डू अ वीडियो ऑन इट, आप जिस तरह की आप जो भी चीजें आपने बताई एक्चुअल में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि P2P में लोगों को क्या बोले कि अवेयरनेस नहीं है या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, Sure, sure. तो है Anupam, ना। Anupam, you Yep. have talked about a great product which is registered under US regulation, Yeah. and whether it is by any chance in coming days that your product can be compliant under Indian law, like PMLA or something like that, as a shadow exchange or सर something which. मैं अभी सुमित आए थे, मैं आई वांट टू कंप्लाई इन इंडिया, पर अभी कोई रेगुलेशन है ही नहीं। अभी तो ऐसा वक्त है कि वो हमारे को सुन ही नहीं रहे हैं।
हमारे सुन ही नहीं रहे. आई एम श्योर सुमित विल एग्री, अगर वो यहाँ पर होते तो गवर्नमेंट की लास्ट प्रायोरिटी इज क्रिप्टो. So you know, it's like that. ये सब कुछ हो रहा है, बट जब तक पंप नहीं आएगा, जब तक नया बुल रन नहीं आएगा, शायद वो इस मार्केट को नोटिस भी नहीं कर रहे हैं. और जब रेगुलेशन आएगा तो we'll be the first people to go in India or other countries also to apply for the licenses like we have done in the US. And in the US we are legally operating and doing all of these on ramps and off ramps of fiat to crypto, crypto to fiat, and fiat to fiat. Anupam, Vijay, Jajit sir, I जी. think I have to leave now. But Vijay, Yeah. thank you Thank you so very much much, for भाई. inviting for the space. Just Karan. And but Yeah. Thank you, last thing, I just Jaska want भाई. to wrap up with few points which I initially told again. Uh, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर किसी के साथ कोई भी क्राइम होता है इंडिया में, ठीक है, किसी को मान लो कोई चाकू मार के चले जाते, तो आप किसके पास जाओगे? ऑफ कोर्स पुलिस के पास जाओगे, ठीक है, या आप बिल्कुल. कोर्ट में जाओगे. Similarly, if anything goes wrong in the world of crypto or anything goes wrong in P2P, okay, so आप कहाँ जाओगे? ठीक है, there is no authority, there is no person जिसके पास आप जाके रो सकते हो कि भाई ये मेरे साथ हो गया, मेरी मदद कर दो, ठीक है. So it's the best thing if you go with a particular exchange which is in India जिसने proper KYC की हुई है. If the things are there, like if things are verified, then only you should proceed. Otherwise it can get you in big trouble, because specifically there is a particular call center industry working, there is a gang work, there are different gangs working which are there to scam the people on the name of P2P and other transactions. They do fraudulent transactions, they send money in your account ultimately from somebody else's account who's sitting in some other country. एंड आपको लगता है कि आपके अकाउंट में पैसा जो बिल्कुल. आया है, बट बाद में पता लगता है वो पैसा तो चोरी करके आपके अकाउंट में डाला है, एंड अल्टीमेटली इंक्वायरी जी. होती है एंड आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, ठीक है. सो सेम थिंग्स इज हैपनिंग. अभी अभी जो बैटिंग का पूरा जो बैटिंग चल रही है ना, आजकल बैटिंग की वेबसाइट्स चल रही हैं, एप्स चल रही हैं जितनी भी, ठीक है, बिल्कुल. गेमिंग वेबसाइट जो चल रही है जो कि अनरजिस्टर्ड है, सेम थिंग इज हैपनिंग इन दैट. यू डिपॉजिट द मनी और यू गेट द मनी इन योर अकाउंट. आपके अकाउंट में कोई थर्ड पार्टी से पैसा आता है और पता चलता है वो फ्रॉड का पैसा है, ठीक है. सो ये सारी चीजों का हमें 2 साल पहले ये बैटिंग एप्स वाला तो बहुत बड़ा हुआ भी था, और पूरा अभी भी न्यूज चल रहा बनी है. नहीं भी नहीं, थी ये. मैंने हम एकदम सहमत है जसकरण से, बिकॉज जी. मुझे क्या हुआ, द 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एक्सचेंज आप P2P में ऑलमोस्ट चला गया, क्योंकि बिल्कुल. 1% TDS राइट का चक्कर राइट. में. तो बिल्कुल. जो जिधर पैसा भागता है ना, उधर स्कैमर भी सही बात भागता है. है. एंड सही स्कैमर बात जो है भागता एकदम. है ना, स्कैमर नया नया तरीका से भागता है. अभी अभी वो जसकरण एंड एवरीबॉडी इन हु हैव, हम लोग जो स्किन इन द गेम है, सबको जी. पता है दैट जिधर पैसा है उधर मधुमक्खी होता है, और सही मधुमक्खी का बात अंदर ही एकदम. स्कैमर होता है. तो वही है दैट somebody विल टेक, माने अभी देखो क्रिप्टो एक्सचेंज, इंडियन का क्रिप्टो एक्सचेंज में अभी पैसा ही नहीं, तो हैक किधर से होगा? तो दे आर टेलिंग सेफ. बट जब भी बुल रन आएगा, अनुपम बोल रहा है, जसकरण बोल रहा है, तब पता चलेगा उतना उसका बेस कितना राइट, सॉलिड है एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. एक्सचेंज Correct. का. लास्ट पॉइंट, Correct. लास्ट पॉइंट और एक्सचेंज का एसिड टेस्ट तभी होगा जब बुल रन राइट. आएगा. अभी एक्सचेंज का पास पैसा ही नहीं है, तो कौन आके एक्सचेंज को छोड़ा मारेगा पीछे से? अभी सही पी टू बात है. पी टू पी टू पी इज द ओनली एरिया जिधर कॉल सेंटर टाइप गैंग बनेगा. आपका ये गैंग बन, जामतारा टाइप साइबर Absolutely, सिक्योरिटी sir. गैंग The बनेगा. most call centers are situated specifically in the West Bengal area as well, sir. Like it's famous for that. एंड वो जामतारा, Right, झारखंड, right, वेस्ट sir. बंगाल, सब वो एरिया में है. Sir, last point which I want to tell is again, जो मैंने, because there are new listeners who have recently joined, so just wanted to tell everybody. जिस स्टेज पे शेयर मार्केट था 1980s में, 1990s में, बहुत सारे स्कैम्स हुए थे, बहुत सारी कंपनीज आई थी, बहुत सारी कंपनीज गई, न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई और टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होता रहा और अभी तक हो रहा है, ठीक है. एंड नंबर ऑफ स्कैम्स होते रहे, तब भी हुए थे और आज भी हो रहे हैं. सो सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट क्रिप्टो, इफ वी टॉक अबाउट ब्लॉकचेन, यस, वी आर एट द सेम स्टेज राइट नाउ जिस स्टेज पे 1990s में, 1980s पे शेयर मार्केट हुआ करता था. अभी हम उस स्टेज पे हैं, बहुत सारे अपग्रेडेशंस होंगे, टेक्नोलॉजी आएगी जाएगी, एंड नंबर ऑफ थिंग्स विल टेक प्लेस, और स्कैम्स तो होते ही रहेंगे. यू कैन नॉट स्टॉप स्कैम्स. अब अगर हम बोलते हैं ना, वी कैन नॉट मेक एनीथिंग
which is which can not prevent hack. मतलब hacking तो हर everything can be hacked, but we can try to make it hack proof, not we can make it hack difficult, not hack proof. Okay. Jaskaran, I am telling you a fantastic fact. You know Harshad Mehta scam in Right, right, 1992. Who wrote it? Sucheta Dalal. right. Recently, Sucheta Dalal told that actually that was not Yes. scam. Harshad Mehta was so clever. He knew the loopholes of Absolutely, RBI sir. and SEBI Absolutely. guidelines. हम्म So जितना भी loopholes था सेबी एंड आरबीआई गाइडलाइंस में, स्पेशली आरबीआई गाइडलाइंस में, वो दिन का कैसे आर्बिट्राज करता था, स्वैप करता था इधर उधर. ही नोज द ट्रेड लाइक मोर देन एनी बैंकर, and बिल्कुल बिल्कुल he has utilized those loopholes of the law and made money. आज का जमाने में होता है एंड प्रॉपर लॉयर रहता है, हमको अभी भी पता नहीं हो जेल हाजत में मर गया ना Sir, मर दिया गया है. बट आज का जमाने में सिमिलरली द पीपल हु आर स्कैमिंग इन right, क्रिप्टो absolutely, मार्केट sir. is because there is no law, And sir, and people, बिल्कुल and even if the law will come, people will find people like me and Sonu will not read the law, will read what is not in the law. sir, So, including me, सही including है me also. what is not in the law means what is not written in the law means loopholes of the law. Right. तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल स्कैमर, ऐसे प्रोफेशनल होते ही रहेंगे. जो जब लॉ है ही नहीं क्रिप्टो में, तो स्कैम तो 100%. अब जब लॉ आ जाएगा स्कैम 50% होगा, बट नया हम्म तरीका का स्कैम वो भी आ फिर कोई सकता है. नया तरीका ढूंढ लेंगे, कोई नया लूप होल ढूंढ लेंगे उसके अंदर भी वो लोग. वही मैं सही बोलना था. बात है, सॉरी बिल्कुल बॉस, बिल्कुल आई सही. हैव टू गो, बट आई एंजॉयड द सेशन. प्लीज कीप ऑन डूइंग. इफ यू वांट बिल्कुल Sir, बिल्कुल sir, सर. adding, sir, if you want sir, me one to last speak, point you on can invite me. your point, one last point. सर गवर्नमेंट सीज एवरीथिंग, ठीक है, दे नो एवरीथिंग कि ये स्कैम ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है. उनकी सारी मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं, दे हैव ऑल स्किल्ड पीपल विद देम. वो सब मॉनिटर करती हैं, एजेंसीज हायर करके भी सब चीज मॉनिटर करती हैं. दे नो एवरीथिंग कि क्या चल रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है. दे नो एवरीथिंग, बट वो तब तक चुप रहती हैं जब तक उनको चुप रहना है. जब तक उनको उस चीज से फायदा हो रहा है तब तक वो चुप रहेंगी. जिस दिन नुकसान होना चालू हो जाएगा, दे विल कम एंड मेक अप द लॉ. इट्स सिंपल. गवर्नमेंट ओनली सीज व्हाट दे वांट टू सी एंड व्हाट दे वांट टू लिसन, नथिंग अरे एल्स. गवर्नमेंट में तो 20 साल पहले एक लोग बोला करता था दैट एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 1 करोड़ तक घूस लेने का अधिकार है, उसका ऊपर जाएगा तो ईडी का हाँ, रेड होगा. तो बोलता है 1 लाख इज द टॉलरेंस लिमिट, 1 करोड़. राइट. 1 करोड़ तक खाने देगा जितना भी है. उसका बाद जैसे तो माई सिंपली इक्वेइंग जसकरण दैट इट इज टोटली फूल. एब्सोल्युटली. इफ वी आर फूल दैट गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं, गवर्नमेंट को सब पता है. बट ये डिजिटल करेंसी है, ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री हो रहा है ऑन अ डिजिटल नोट. तो इसको पकड़ने के लिए जो तरीका होना चाहिए वो उनका पास आज रेडी नहीं है, इसलिए वो चुप बैठा है. हम्म. जिस दिन उसका पास वो हो जाए, बिकॉज ब्लॉकचेन ऐसा टेक्नोलॉजी है जो मोस्ट ट्रांसपेरेंट एंड, राइट. लोग बोलते हैं ब्लॉकचेन ऑन चेन ट्रांजैक्शन इजीली ट्रेसेबल है. ब्लॉकचेन में जी. अनट्रेसेबल कुछ है ही नहीं, ये हम्म प्रॉपरली कर सकते हैं तो. लेकिन किसका वॉलेट एड्रेस है वो तो पता नहीं लग सकता ना. नहीं नहीं, वो भी लग सकता है, वो भी लग सकता है. P2P एनोनिमस में थोड़ा इशू है. बट जी. बट इफ यू टॉक टू चेन एनालिसिस गाय, एलिप्टिक गाय एंड एब्सोल्युटली. ऑल ब्लॉकचेन फ्रॉड दे जो दे ऑन हेल्प चेन साइबर एनालिसिस सिक्योरिटी करके, एजेंसीज राइट नाउ. they Yeah, have the exactly. security agency that they can find out the IP address of the wallet also. And I even in the digital data protection जो bill आ रहा था, that IP address of MetaMask wallet or any wallet is जी. qualified as a personally identifiable information under Right. Digital Data Protection Act. So it is not easy. It will be, माने तुम हम लोग सोचते गवर्नमेंट बुद्धू है, गवर्नमेंट बुद्धू नहीं है. उनका एक टॉलरेंस लिमिट है, उसका Absolutely. बाद वो काम पे लग जाएगा. So, sir, as you told सही बात before, है, बिल्कुल सही सही. बात we है. can make it hack difficult but not hack proof. हम्म सी बिल्कुल. गवर्नमेंट एक तरफ है डायना हाथ में, बाया तरफ हैकर है, बीच में P2P वाला है. अभी वो उनको सोचना है वो गवर्नमेंट का तरफ जाएगा ना स्कैमर का तरफ जाएगा.
This is Right. my last year. Thank you. Good night. Okay sir, good night. थैंक यू Happy सर, Independence थैंक यू Day. विजय सर। भाई प्लीज नेक्स्ट टाइम ना, इस बार मैंने कमेंट्स जो पढ़े ना, हाँ जी, व्हाट आई फील इज नेक्स्ट टाइम हाँ व्हेनेवर हाँ, वी आर गोइंग टू प्रमोट आवर स्पेस, स्पेसिफिकली वी नीड टू मेंशन दिस पॉइंट ऑन टॉप, ठीक है, कि ये स्पेस हम्म, इंग्लिश में होगी, हिंदी में होगी, बिकॉज मैंने खुद बहुत लोगों को, मेरे हम्म, पास डाउट लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं हमेशा, जब भी मैं कम्युनिटी मीटअप्स में जाता बिल्कुल। हूँ एज अ स्पीकर, कहीं पर भी जाता हूँ, लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, तो बोलते हैं सर आप हिंदी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, हम लोग इतनी स्पेसेस अटेंड करते हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स से गो थ्रू करते हैं, बट हमें नहीं समझ में बिल्कुल। आता। ठीक है, आज की डेट में, भाई वो ये ना, बहुत सारे जार्गन्स हैं हाँ और जी हाँ बहुत जी हाँ लाइक जी, लाइक ये टेक्निकल लैंग्वेज आ इवन जाती है आज की तो हर डेट कोई में नहीं जब समझ मैं बोलता पाता हूँ कि है। सर कि आप लोग होली बुक ऑफ सतोशी 10 बार रीड करो, सतोशी व्हाइट पेपर के बारे में नहीं हम बात पॉसिबल है करेंगे, सर, नहीं बट वो पॉसिबल आज की है। डेट में ऐसे बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्स हिंदी में अवेलेबल ही नहीं है, कि मतलब देयर शुड बी दैट शुड बी इन डिफरेंट लैंग्वेजेस सो दैट पीपल कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड थिंग्स एट द एंड ऑफ द डे। चलो सर, हम बैठ के डन। बनाते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं हिंदी ओके में, विजय भाई, थैंक यू सो मच, है ना? थैंक यू ईच एंड एवरी चलो, लिसनर हु वाज हियर एंड ईच एंड एवरी स्पीकर, थैंक यू सो मच, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे थैंक अगेन। यू वेरी मच जसकरण भाई फॉर थैंक ज्वाइनिंग। यू। ओके। ओके अनुपम भाई, क्योंकि हम अपने लाइक लास्ट की तरफ आ चुके हैं, इस समय हाँ हाँ हमारा हाँ। समाप्त हो रहा है, तो आपने एक प्रॉमिस किया था कुछ गिव अवे का, यस यस वो यस। अगर अब आप रिवील करना चाहें तो आई थिंक दिस इज द राइट मोमेंट टू रिवील, क्योंकि हम एक्चुअली अपने टाइम लिमिट से ऊपर जा चुके हैं। श्योर श्योर तो कर श्योर। दीजिए रिवील, क्या 100%। गिव अवे करना चाह रहे हैं आप? So before I reveal that, I just want to say कि it was great doing this space with you, Vijay. आपने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड अदर स्पीकर्स आल्सो। और जनरल कंसेंसस जो निकल कर आया वो इससे यही है कि थोड़ा सा ट्रस्ट हमें देना पड़ेगा सेंट्रलाइज एंटिटीज को, राइट? और वहाँ बिल्कुल से बिल्कुल। ही हमें थोड़ा गारंटी मिलेगा सेफ्टी की, सिक्योर की। और क्योंकि हमारा इट्स हम्म, अबाउट आवर हार्ड एंड मनी, वी शुड नॉट टेक इट लाइटली. So that's I बिल्कुल। think I understood, and I think everybody should be wary of P2Ps and all. So the final announcement I want to make about the giveaways is कि जो भी आप में से जो भी अगर अपना क्रिप्टो लिक्विडेट करते हैं, आपके पास अगर ऑलरेडी क्रिप्टो है तो आप लिक्विडेट कर सकते हैं USDT USDC बाइनामाइट पे जाकर। और फर्स्ट 10 यूजर्स को हम लोग एयर ड्रॉप करेंगे $5 अप टू $10 भी एयर ड्रॉप कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रैफल। पर एटलीस्ट $5 आपको हम लोग 100% डालेंगे उसमें, ज़्यादा भी हो सकता है। बट इट रियली डिपेंड्स, आपको एटलीस्ट $15 अगर आपके पास USDT ऑलरेडी है तो अगर आप जाओगे तो फर्स्ट 10 यूजर्स विल गेट द एयर ड्रॉप फ्रॉम आवर साइड। अगर आप क्रिप्टो अगर आपको अपने क्लाइंट से पेमेंट लेना है तो अप टू first 20 users we will airdrop more tokens, more USDT in your account. So basically there are two products. If you already have USDT and USDC, you can go sell on Bynamite and receive INR in your bank account. But if you want to invoice your client in the future or send them a payment request, if you use Bynamite for that, then if first 20 users, we will airdrop more USDT in your account for using Bynamite. क्या बात है अनुपम भाई, यही बात एक बार फिर से पूरी हिंदी में भी बोल दो, हाँ, ताकि जो बचे हुए हैं उनको भी समझ आ जाए। अगर जब आप बाइनामाइट पे जाकर अपना USDC USDT बेचोगे, उसमें टॉप 10 यूजर्स को हम लोग एयर ड्रॉप करेंगे USDT USDC फर्स्ट टेन, व्हाटएवर। फर्स्ट टेन, टॉप फर्स्ट टेन। फर्स्ट फर्स्ट 10 जो पहले टॉप जाकर 10 तो फिर हम कंपटीशन वाली बात में चले जाएंगे। नहीं नहीं, आई मीन फर्स्ट 10 यूजर्स को हाँ, हम लोग फर्स्ट 10। एयर ड्रॉप करेंगे $5 $10 इवन $15 भी हो सकता है। इट्स एटलीस्ट $5 तो होगा ही होगा। और अगर आपको फ्यूचर में अगर अपने क्लाइंट को इनवॉइस भेजना है, पेमेंट रिक्वेस्ट भेजना है, देन यू कैन यूज बाइनामाइट उसके लिए भी। और जब आप बाइनामाइट उसके लिए यूज करेंगे और आपकी पेमेंट आएगी, और जो फर्स्ट 10, मैं फिर से टॉप बोलने वाला था वैसे, फर्स्ट 10 यूजर्स फर्स्ट फर्स्ट 10, 10 यूजर्स को ठीक है। हम लोग और एयर ड्रॉप करेंगे $5 $10 $15। सो दीज आर, ये दो चीजें हैं जो भी आपको है। अगर आपका क्लाइंट LSE पेमेंट आ चुका है आपके मेटामास्क में ऑलरेडी, USDT USDC है, तो आप कर सकते हो। अगर आपका फ्यूचर में पेमेंट आना है तो आप उनको भी इनवाइट कर सकते हो बाइनामाइट पे, जो आपको पेमेंट कर देंगे। और अगर उनको फियाट से करना है तो वो अपना डायरेक्टली अगर जब आप बाइनामाइट पे उनसे रिक्वेस्ट मांगोगे पेमेंट का, तो वो अपने ईमेल से डायरेक्टली जाकर आपको पे कर सकते हैं। ओके, तो एक काम करेंगे भाई, हम अगले 2-4 दिनों में जब भी आपके पास टाइम हो, हम एक बार एक वीडियो कर लेंगे, है ना? हाँ 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 ताकि बिल्कुल। लोगों को चीजें हम और अच्छे से, क्योंकि काफी कमेंट्स ऐसे भी आए कि क्या कोई इसके लिए कोई गाइड है, ट्यूटोरियल है कि कैसे यूज करना है,
तो नहीं हम फिर लोग उसका एक तो ट्यूटोरियल ही शेयर बना करके लेंगे, लिंक राइट। करके एक वीडियो करते हैं। ठीक है, अभी के लिए जो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या बोला। वैसे एक बात है भाई, उसका जो ये गिव अवे है, अब लाइक उसके लिए तो उनको लाइक कोई लिंक या समथिंग चाहिए होगा, तो वो लिंक लाइक आप डालोगे या मैं डालूं, या आप आप चाहो डाल तो दो, आप अभी। आप ठीक डाल है। दो। हमारे एक रेफरल प्रोग्राम का लिंक है, वो शायद विजय आप वो डालोगे वहां पर। हाँ, जो भी फर्स्ट 10 यूजर्स हैं जो आएंगे उस लिंक से और सेंड मनी पे क्लिक करके अपना लिक्विडेट करेंगे, उनको हम रिवॉर्ड देंगे। अनुपम भाई एक काम करिए, आप ही कमेंट्स में लिंक डाल दीजिए, मैं उसको इस पेज को खत्म होने के बाद उसको रिकोट करके उस पे अच्छा वो चीजें लिख दूंगा, है ना। दैट वुड बी ठीक है। लाइक इजी और कंफर्टेबल होगा वो चीजें। तो जब तक अनुपम भाई वो लिंक डाल लें तब तक मैं बोल देता हूँ एक बार फिर से कि क्या करना है आपको। लिंक जो अनुपम भाई डालेंगे वहां से जाके आप अपना लाइक अकाउंट क्रिएट करिए, वहां पे जो भी पहले 10 लोग अकाउंट क्रिएट करके वहां पे अपना $15, $15 ना अनुपम भाई। हाँ मिनिमम $15 है इस हाँ, केस में। मिनिमम $15। हाँ, तो मिनिमम $15 को लिक्विडेट करते हैं, यानी कि आपके पास अगर यूएसडीटी है, यूएसडीसी है, उसको जाके आप वहां पे कन्वर्ट करते हो आईएनआर में, तब आपको लाइक $5 का वो मिलेगा, हाँ है ना। पांच डॉलर ना, एटलीस्ट पाँच राइट, डॉलर हाँ। तो आपको $5 मिलेंगे वहां पे, ठीक है। और ये लाइक फर्स्ट 10 यूजर्स को, जो भी पहले 10 लोग लिंक से जाके ये काम पूरा निपटा देंगे, उनको मिल जाएगा ये। और बाकी जो पूरा क्लाइंट्स वाली जो भी चीज है, उस चीज को लेके हम एक वीडियो कर लेंगे। वो लिंक आपको मेरे कुछ अगले कुछ दिनों के अंदर ही ट्विटर पर भी यहाँ शेयर मैं कर दूंगा। और हम अपने यूट्यूब पे एक वीडियो बना देंगे। तो अगर आपको लाइक फॉलो अप तो करना पड़ेगा उस चीज के लिए ना, आपको पता कैसे लगेगा, तो मेक श्योर कि आप फॉलो कर लो। मैं लाइक यूट्यूबर्स की तरह वो लग गया करने भाई। सब्सक्राइब टू माय चैनल वाला सीन करने लग गया मैं यहाँ पे भी। इट एक्चुअली वर्क्स, काम करता है विजय। तो हाँ, क्योंकि देखिए एक चीज है, सिंपल सी बात है, हम कम्युनिटी के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। हमने लाइक ये पूरा स्पेस ऑर्गेनाइज किया, लाइक काफी बड़े बड़े लोग आए, लाइक सीईओज हैं और क्रिप्टो के एक्सपर्ट्स हैं, टैक्स एक्सपर्ट्स हैं। इतने सारे लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करना इज नॉट अ इजी थिंग, है ना। और क्योंकि सबके अपने अपने टाइम्स होते हैं। तो अभी जैसे अनुपम भाई गोवा में वेब3 कॉन्फ्रेंस में है, लेकिन वहां से अभी इवेंट चल रहा होगा कुछ ना कुछ, लेकिन ये हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। सुमित गुप्ता कॉइनडिसेक्स के सीईओ होते हैं, वो आए देखो अपना टाइम निकाल के। जसकरण भाई लाइक ये तो गवर्नमेंट पीआर मीडिया एजेंसीज में बहुत बिजी हैं, वो हैं। सोनू भाई अपना टाइम निकाल के आए, और आप लोग सुनने के लिए टाइम निकाल के आए। तो अपडेट्स के लिए जरूरी है कि आप फॉलो करें, तो आपको क्या है, कोई भी हम अपडेट डालेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो आई थिंक आज के लिए हमने काफी चीजें और कुछ एक्स्ट्रा कवर अप भी कर ली, जो एक्चुअल में हमारे पूरे प्रोसेस में नहीं थी, प्लस बिल्कुल बिल्कुल है विजय ना भाई। बहुत सारी चीजें। जी। तो सोनू भाई कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स आप देना चाहेंगे। Yes, Vijay bhai. So I think it is already concluded कि on the P2P major तो issue. सोनू भाई आप थोड़ी सी अपनी पोजीशन बदलो, आपका नेटवर्क खराब है। Is it audible now? वो हम बोलते हैं ना, छत पे जाओ, छत पे नेटवर्क अच्छा आता है। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक। बोलिए। So I think जैसे हमने पहले डिस्कस किया था on the P2P aspect, so I think P2P एक major concern है for the whole industry. तो जी। बट आई थिंक जो बट एज फार एज जो मेरा एक्सपीरियंस है डीलिंग विथ वेरियस क्रिप्टो इन्वेस्टर्स, तो देर आर हम्म। वेरी फ्यू पीपल हु यूज P2P। मतलब अगर मैं उसको बाइफरकेट करूँ कि हु यूज P2P, 90% ऑफ द हम्म। पीपल हु यूज द वंस हु डोंट वांट टू, सो दैट आई कैन नॉट पुट इट इन बेटर वर्ड, जी। सो दैट इज हाउ इट इज। तो आई थिंक क्योंकि उनका वो रिस्क एपेटाइट है, दे आर रेडी टू लाइक कि मतलब कल कुछ भी हो जाए वी विल टेक केयर ऑफ इट। सो अगेन अप्रोच, क्योंकि जब वो पेनल्टी लगेगा आप इनकम ही नहीं गवाओगे, आप अपना कैपिटल भी गवा बैठोगे। बिल्कुल बिल्कुल सही पेनल्टीज बात है। कैपिटल डेफिनेटली इट इज नॉट एडवाइजेबल टू द कम्युनिटी कि आप मतलब सोनू ब्लॉकचेन भाई में उनके पास कोई ऑप्शन, सोनू भाई ये जो अनुपम। P2P कर रहे हैं उनके पास अभी कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना इंडिया में। जैसे कि हाँ उनको टैक्स बचाना है, दैट्स वन थिंग, पर जो यूजर से हम बात कर रहे हैं
उनके क्लाइंट्स उनको पे कर रहे हैं यूएसडीटी में, तो अब वो यूएसडीटी का क्या करे, मतलब उनको आईएनआर चाहिए। तो मेजोरिटी ऑफ द यूजर्स दैट वी हैव ऑन बाइनामाइट वो यही कर रहे हैं कि उनको P2P करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी वो कहाँ जाके लिक्विडेट करेंगे अपने यूएसडीसी। They don't mind paying the taxes, they don't mind 1%, they don't mind Yes, anything, Anubhav, they don't mind reporting anything, they don't mind. issue. But again, आप अगर exchanges के point of view से सोनू सोचो, भाई की आवाज एक्चुअली मुझे नहीं आ रही है बिल्कुल भी। अनुपम भाई आपको इनकी आवाज आ रही है? नहीं, कट रही मुझे है बहुत, एक्चुअली काफी चॉप कट रही है ना? Yeah. सोनू भाई एक काम करते hello, हैं, is it audible क्योंकि now? हम इस हाँ जी हाँ जी, बीच बीच में सोनू भाई आपकी आवाज आ रही है, बीच बीच में चली जा रही है। मैं क्या कहता हूँ, एक काम करते हैं, Hello. अभी हम ये स्पेसेस वाला सिलसिला कंटिन्यूटी में जारी रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? 100%, हाँ जी। है ना, ये प्रोसेस चलता रहेगा। और अभी देखो खुद से ही विश्वास जी ने भी बोल दिया कि वो भी आया करेंगे, सुमित गुप्ता ने भी बोल दिया वो भी आया करेंगे, ठीक है? तो ये हम इसे एक रेगुलर प्रैक्टिस बनाएंगे कि हर कुछ दिनों में वो हम अनाउंस कर दूंगा मैं प्लान करके कि कैसे हम कर पाएंगे, पॉसिबली क्या हो सकता है। तो हर कुछ दिनों के अंदर हम ये स्पेस करते रहेंगे किसी ना किसी टॉपिक को, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, डेली नया यूजर आ रहा है वेब3 ब्लॉकचेन के अंदर और बहुत कंफ्यूजन होते हैं, तो हम रेगुलर बेसिस के ऊपर ये स्पेसिस करते रहेंगे। तो मेक श्योर जो भी अभी हैं यहाँ पे जो सुन रहे हैं वो भाई फॉलो कर लो, ताकि आपको ये अपडेट्स आते रहें जब हम स्पेसिस करें, ठीक इसको है? इंडिया का स्पेस बनाएंगे, इंडिया का क्रिप्टो स्पेस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, हाँ, जहाँ पे बिल्कुल। लोगों की आवाज पहुंचनी चाहिए। सही है। सोनू भाई का मैसेज आया कि स्पेस इज ट्रक, अभी लाइक मेरे साथ जो स्टार्टिंग में हुआ सोनू भाई के साथ वो एंडिंग में हो रहा है, लेकिन चलो हमें मौका मिल गया उनसे बहुत कुछ सीखने का। जी जी जी, ठीक है विजय, आई थिंक थैंक वी यू शुड वेरी पुट मच एवरीवन, अनुपम द भाई थैंक यू वेरी मच, है ना? थैंक यू विजय, और थैंक यू। फिर से एक बार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और ब्रो। चलते हैं, फिर रात हो गई है बहुत, है ना? या चलते हैं ओके, अभी। थैंक यू सब लोगों एवरीवन को फॉर लिसनिंग, थैंक यू एवरीवन गुड फॉर नाइट, कमिंग। शब्बा खैर। जल्दी मुलाकात होगी आप सब लोगों से फिर से एक बार। और मैं अनुपम भाई ने लिंक डाल दिया गिव अवे का, मैंने उसको रिकोड कर दिया है, वहां पे लिख दिया है आपको क्या करना है। तो मेक श्योर कि आप लोग जाएं, पहले 10 पीपल विल गेट